समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू लर्न समथिंग न्यू टुडे, ओके? तो जो टॉक है, टॉक से ज़्यादा देर आर सो मेनी अदर थिंग्स आई वांट टू टॉक टू यू. You are most of you are pharmacy students and this talk is pretty much directly directed to you. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. यहाँ फैकल्टी भी हैं, there are some very eminent scientists who knows a lot about science, but my goal is to see if we can excite some students in the back कि आप रिसर्च करना चाहो, आप आगे बढ़ना चाहो तो कैसे बढ़ सकते हो. ठीक है. तो मल्टीपल पर्पस है स्टॉक का, सो आई होप कि वी कैन लर्न अबाउट ईच अदर टुगेदर. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट a new invention, a new technology that we have discovered, or at least we are working towards, to target multi-drug resistant cancer. अब ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कैंसर क्या होता है? ठीक है, इसको हम समझेंगे. हम ये भी समझेंगे कि नॉन अपोप्टोटिक सेल डेथ क्या होता है. आई एम श्योर कि आपके करिकुलम में सेल डेथ, अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा. बट टुडे आई थिंक वी विल रिफ्रेश दैट नॉलेज और बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी भी डिस्कवरीज हैं, अगर आपको बेसिक फाउंडेशन आपकी अच्छी है, यू कैन मेक लार्ज डिस्कवरीज. सो ये जो डिस्कवरी है तो एक्सीडेंटली हुई थी, हम देख भी नहीं रहे थे इधर, but we found something very interesting. Okay, so let's learn about this new technology. So पहले तो मैं कहाँ से हूँ? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो से हूँ. ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, can you see point out? Let's see if I can use a pointer option. Okay, यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो जो है, इट्स ऑन द कॉर्नर ऑफ मिशिगन एंड ओहायो. ठीक है, ये इट्स वेरी लार्ज कैंपस, जस्ट लाइक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बट लार्जर इन साइज. बट स्टूडेंट पॉपुलेशन इज़ वेरी वेरी मच लोअर देन हियर. यहाँ पे 3 लाख स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे सिर्फ 20,000 स्टूडेंट्स हैं, बट दे हैव 450 डिफरेंट प्रोग्राम्स. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर योर फ्यूचर स्टडीज, मास्टर्स, PhD, पोस्ट डॉक, यू नो, बात कर सकते हैं उसके बारे में. तो यहाँ भी ये कैंपस है. माई लैब्स एंड बिल्डिंग्स आर इन दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो. एंड आई वियर नंबर ऑफ डिफरेंट हैट्स. बहुत सारे अलग अलग एरिया में काम करता हूँ मैं, बट जो लैब इज फोकस इज ऑन प्रिसिजन मेडिसिन, टू फाइंड सम टारगेटेड एजेंट्स from natural products and also from synthetic agents. So this particular place, Jhansi, is very rich in natural sources, as we know. हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं to deliver and discover new drugs and new molecules and new strategies to treat cancer is something what I'm focusing on. Part of the lab is also focused on drug delivery and drug interactions. So I collaborate with some eminent scientists in the world. You will hear today from Dr. Ramapuram some really fancy thing about drug delivery, formulation design. ठीक है, pharmaceutics में अगर आपको कुछ सुनना है तो you will hear something very interesting today. ड्रग इंट्रैक्शन पे काफ़ी काम है. फिर आई लुक एट द मॉलिकुलर मैकेनिज्म्स लाइक ट्रांसपोर्टर बायोलॉजी, एजिंग, एंटी एजिंग पे भी काफ़ी काम है. और आजकल एक नया पैशन डेवलप हुआ है टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस. सो उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे, टॉक छोटी है. सो वी विल फोकस ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक एंड टॉपिक विच इज़ ऑन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, राइट? एंड आई एम होपिंग कि आपको मेरे टॉक के बाद ये समझ में आ गया, पहली बात मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है आजकल, और कैसे उसको और ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है कैंसर का. सो बिफोर वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कैंसर. ओके, एज यू नो, कैंसर इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. सबको पता है कैंसर के बारे में, आई एम श्योर कि आपने कैंसर के बारे में सुना हुआ है. And you also know that there are some treatment option that is available, which is surgery, radiation, chemotherapy, और आजकल immunotherapy ज़्यादा यूज होता है. Okay, guys, come on, quickly sit down. We really need to learn something today. Okay, thank you. So what I was talking about was cancer. Cancer is a big problem, but even bigger problem in cancer is drug resistance. You know कि when we treat cancer patients, many of cancer patients we can actually treat, but कुछ समय के बाद वो दवाई काम करना बंद कर देती है या कम काम करती है. What we call as multi drug resistance. Why do we call multi drug resistance? क्योंकि जो थेरेपीज हम ट्रीट कर रहे हैं उसको,
वो ही नहीं काम करना बंद करती है, जो बाकी अदर मेडिसिन जो कि स्ट्रक्चरली एंड मैकेनिस्टिकली डिफरेंट होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर की होती है, डिफरेंट क्लास की होती है, वो भी काम करना बंद कर देती है. So we have to give more drug to get the same effect. That is what we call drug resistance. कैंसर पुश कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है अपने आप को मारने बचने के लिए, राइट? तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं. इनफैक्ट अगर आप किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछेंगे कि कैंसर पेशेंट्स मरते कैसे हैं, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि कैंसर ब्रेस्ट में हुआ और उससे मर गया. जनरली स्पीकिंग जहां पे भी कैंसर होता है वो जब तक स्प्रेड नहीं होता है दूसरे ऑर्गन्स में, right? A process called metastasis. Okay. I think somebody needs to direct the students to find a place to sit. Okay. So when the cancer spreads in different organs, you know, that's when we know that it is metastasized, and that's how we can treat the cancer. Okay. तो metastasis कब होता है? जब cancer resistant होता है. So 90% of the cancer that becomes drug resistant actually become metastatic. And that is how patients die. So let's understand कि ये resistance होता कैसे है. What are the mechanisms of drug resistance? So as you know, drugs can be less absorbed. I think we should wait for 1 minute so everybody can get seated. I think otherwise they'll get disturbed. Okay, please get seated so we can talk more. All right. क्या समझे अभी तक हम लोग? कुछ समझ में आया? अगर आप समझ में नहीं आया तो फिर कैसे समझ में आएगा? ओके, ड्रग रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि उसके बाद जब मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजी की तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे. इसलिए बेसिक समझना सबसे ज़रूरी है. भले ही आप क्लासरूम में आप सुने होंगे ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में, बट रिफ्रेश दैट नॉलेज, बिकॉज मोर यू नो बेसिक्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सम न्यू डेवलपमेंट्स. ओके. तो ड्रग जो है, इधर फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी. यू नो दैट. फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है और फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है? What drug does to the body and what body does to the drug. What drug does to the body, मतलब आपने कोई दवाई ली और क्या इफेक्ट हुआ, वो फार्माकोडायनामिक्स है. What body does to the drug, एब्जॉर्प्शन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, मेटाबॉलिज्म कैसे है, एक्सक्रीशन कैसे है, वो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है. And that is perhaps one of the bigger reasons for drug resistance, meaning if the drug is less absorbed or less distributed, it reaches less to the target site. हमारा target site क्या है? Cancer cells, right? When the drug reaches to the cancer cell, it has to then go inside the cancer cells. It has to go inside the cancer cells. It has to find its target. आपने सुना होगा कि it has to find its target, and target modification होता है. Then it leads to signaling pathways. And generally speaking, the cancer cells, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? Cancer cells को मारने की कोशिश कर रहे हैं. We are trying to kill the cancer cells. And how do they get killed? Is by a cell death process called apoptosis. Apoptosis को हम कहते हैं programmed cell death, right? So it leads to number of signaling cascade here. I'm not going to go over details on that, but that triggers cell death. Other thing that happens is if the drug is pumped out, आपने कल डॉक्टर वोगल का लेक्चर सुना था. She talked about a drug resistance transporter जो कि ड्रग को बाहर पंप करता है. That can lead to drug resistance. That is called ABC transporters. Okay. And also sometimes drug gets metabolized more and excreted quickly. This can all lead to drug resistance, meaning the drug amount that is needed inside the cancer cell is not enough to kill the cancer cells. We call it drug resistance. So that is how I got introduced to cancer research. अच्छा खासा यहाँ पे नेस्ले में जॉब कर रहा था यहाँ पे इंडिया में, बट ये हुआ कि चल के बाहर पढ़ाई करते हैं, वापस आएंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी उसमें काम करेंगे. बट I went to US, I got hooked up into research. The reason being, मुझे लगता था कि हम फार्मेसी कर रहे हैं, हम दवाई बना रहे हैं, दवाई देख रहे हैं, दवाई दे रहे हैं पेशेंट्स को, इसलिए क्योंकि दे आर लाइक मैजिक. आपने दवाई दी पेशेंट को, वो ठीक हो गया. इससे ज़्यादा मैजिक क्या हो सकता है? I mean, you are treating the patients when they're dying, right? Or they are have some serious conditions. So that's such a magical thing, but that magic sometimes fade away.
वो जादू खत्म हो जाता है कभी कभी. क्यों? बिकॉज drug has variable bioavailability, and you should start knowing these terms, and I'm hoping that you know all these terms. Okay, variable bioavailability hota है, there are toxicity, side effects, unpredictable drug-drug interactions, or what we call development of drug resistance. इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ABC transporter is linked to all of these. ABC transporter stands for ATP binding cassette transporter, meaning it uses ATP energy to pump out the drug outside from intracellular to extracellular matrix. Okay, that is how it becomes drug resistance. So अगर आपको क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में समझना है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट 50% ऑफ द क्लिनिकल ड्रग्स, जितनी भी ड्रग्स हैं, जितनी भी आप ड्रग्स डिस्पेंस करते हो या देखते हो या आप सुनते हो, दे आर सबस्ट्रेट्स ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर, मीनिंग कि दे कैन रेजिस्ट those drugs, they can cause drug resistance, they can affect their pharmacokinetics, so it's a problematic transporters. ठीक है. दूसरा जो हम कैंसर में देखते हैं, ये काफ़ी एक्सप्रेस होता है. 70% ऑफ द पेशेंट्स हैव मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ओवर एक्सप्रेशन ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर्स. इट्स अ मेजर मेजर कॉज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस. तो इसको और अच्छे से समझते हैं. ठीक है. अगर आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे, इसको इफ यू, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन राइट हियर, राइट, and what happens, the drug enters the cell either through diffusion or carrier mediated transport, but presence of these transporters abcb1, abcc or abcg2 pump the drug outside the cell. Simple भाषा में, हम कैंसर ड्रग दे रहे हैं पेशेंट्स को मारने के लिए, कैंसर सेल को मारने के लिए, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इनका फंक्शन होता है कि दे शुड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम xenobiotics. They should protect our body from anything that is we are trying to kill the cancer cells or anything in our body. And they start thinking these cancer drugs are foreign bodies, so they start pumping it out, and that is how drug resistance happen, right? तो इसका रोल बहुत समझ में आया कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट वी कैन डू, वी सिंपली थॉट कि हम लोग इसको ब्लॉक कर देते हैं जहाँ से एटीपी जा रहा है. इफ यू कैन ब्लॉक दैट ट्रांसपोर्टर्स, it will lead to more accumulation of drug and we can treat the patients. Simple, right? So if you can develop ABC transporter inhibitors, you can treat the patients. That's what we tried to do. We did a lot of research, tyrosine kinase inhibitors पे, नए नए molecules पे. We synthesized a lot of molecules. Dr. Karthikeyan is here, is one of our leading chemists who synthesized a lot of molecules to target these ABC transporters, but we could not come up with anything. So long story short, there is no FDA approved drug for ABC transporters, and I can name a lot of reasons why this approach or this effort has not succeeded. We are still trying to address those, and I'm not going to go in details about that, but bottom line is अभी तक हमारे पास क्लिनिक में कोई भी FDA approved ABC transporter inhibitor नहीं है. ठीक है. And the reason I'm telling you about all this effort is कि as a scientist हम लोग काफ़ी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, कुछ और हाइपोथेसाइज करते हैं कि ये काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रॉब्लम है, इसको अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो वो काम करेगा. बट कभी कभी हम इतने फोकस्ड हो जाते हैं, वी आर सो लेजर फोकस्ड इन अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम दैट वी make it look very big. So all our scientists would agree that sometimes we are working on one small protein or one small receptor or one small tyrosine kinase that we think that if we just block that, कैंसर की समस्या ही खत्म हो जाएगी. Precision medicine, it will solve all the problem of the disease that we are trying to treat. But that is not the case. So we have to zoom out. बाहर निकल के देखना पड़ता है कि यार काम क्यों नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ है, राइट? तो इसको और समझेंगे और मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं इसके बीच में, बट एबीसी ट्रांसपोर्टर जो साइंटिस्ट है वो एक बार में एक एबीसी ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हमें पता है कि 39 एबीसी 49 एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, राइट? उसमें से 9 जो हैं, 9 दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर causing drug resistance. So if you only inhibit one transporter, how can you expect the drug resistance to be solved? And not only they are one transporter, they are co-expressed, एक साथ express होते हैं. If you look at this thing, at blood brain barrier या brain में या liver kidney में देखोगे आप, तो उनका expression जो है similar होता है या co-express होता है. At the same time, they have functional overlap. Okay, meaning they also pump similar type of drugs. So if you inhibit one transporter, it is possible that the other transporters may be taking over the role, right?
तो बहुत सारे रीज़न से ये काम नहीं करता है, एंड आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल दिस बिग डेटा कि हमने बहुत सारी ड्रग्स को देखा जो कि कई सारे ट्रांसपोर्टर एक साथ पंप करते हैं। तो अगर आप एक को इनहिबिट करोगे तो कैसे आप रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हो एबीसी ट्रांसपोर्टर को इनहिबिटर बना के। एट द सेम टाइम इफ यू गो इन द जूम इन द मॉलिकुलर लेवल, राइट, किडनी में जाके देखोगे, लिवर में जाके देखोगे, या इंटेस्टाइन में जाके देखोगे, तो आपको एक एक सेल के अंदर दिखेगा कि जो ट्रांसपोर्टर है ये अलग अलग फंक्शन करते हैं, कुछ एक्सक्रीट कर रहे हैं, कुछ ब्लड में डाल रहे हैं। तो बहुत ही डिफरेंट होम्योस्टैसिस होती है। अगर आप एक ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करेंगे तो हो सकता है कि दूसरा ट्रांसपोर्टर उसका काम ले पा रहा हो। इट इज़ कॉल्ड ओवरलैपिंग फंक्शंस या रिडंडेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। ओके, दिस इज नॉट मच पब्लिश्ड ऑन रिडंडेंसी। सो अगर आप जाके रिव्यूज पढ़ेंगे इसके बारे में तो शायद ज़्यादा मिलेगा नहीं लिटरेचर, बट देर आर सम रिपोर्ट्स, सम फाइंडिंग्स, सम पीपल ऑलरेडी थिंक दैट दैट इज़ द कॉज। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो एक अप्रोच ये है कि आप ऐसे मॉलिक्यूल्स डिस्कवर कीजिए that can inhibit more than one transporter. So we are trying to understand those permutation and combination. How can we inhibit 1, 2, 3 or 2, 3 or 3, 1 करके transporter को, which is playing a role in drug resistance. Okay. So this is one of the area. ये जो जितनी भी कहानी बनाई है मैंने अभी तक, ये सिर्फ एक भूमिका थी आपको यहाँ तक लाने की। अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, ये सब पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ से जितनी भी चीज़ें बताऊँगा मैं, कुछ भी पब्लिश नहीं हुई है। इट्स अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट हमने एक नया सेल डेथ मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। तो वो आज आप कुछ बहुत ही नया सीखने वाले हैं, एंड आई होप कि दिस विल इंटरेस्ट योर पीक। जो नया ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, दैट इज़ द पर्पस ऑफ द कॉन्फ्रेंस। कुछ नया सीखने के लिए आए हम लोग यहाँ पे, राइट। सो लेट्स ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। So what you will learn today is on a new cell death mechanism, or newer type of cell death mechanism that we call methuophagy. बहुत ही टंग ट्विस्टिंग वर्ड है, बोलने की कोशिश करिए ज़रा। मेथुआफजी कैसे बोलते हैं? सुनाई नहीं दे रहा है मुझे तो। कोई मैथाफजी बोल रहा है, कोई मेथु बोल रहा है, क्या बोल रहे हो आप लोग? मेथुआफजी, गुड। अब हम सीखेंगे मेथुआफजी होता क्या है और कैसे डिस्कवर होता है। इसके पहले ही समझना ज़रूरी है कि सेल डेथ होता क्या है। तो आपको पता है अगर कोई कैंसर सेल है, इफ़ यू गिव इट अ ड्रग, राइट, तो the cancer cell, if it has to kill the cell through apoptosis, these cells, there is membrane blebbing, bleb karta hai, that actually makes the nucleus shrink. There's a nuclear condensation. They form apoptotic bodies, and these apoptotic bodies are phagocytosed. Okay, we also call this death by suicide or apoptosis. Okay, there's another cell death mechanism that is very well understood, which is called necrosis, where the cells, when they're injured, or when they are infected, they are swell and they cause this cell bursting. Okay, and that is called, they lead to blebbing, and there is more inflammation in this process called necrosis. So ये दो सेल डेथ प्रोसेस तो हमें मतलब काफ़ी सालों से पता है, कई डिकेड से पता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन। तो लेट मी टेल यू अबाउट अ स्टोरी दैट हैपेंड। तो एक बार की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 5-7 साल पहले की बात है। हम लोग कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा टारगेट हमने पकड़ा था कि इफ़ यू कैन टारगेट दैट, वी थॉट कि हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें कोलोरेक्टल कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे यार। We were developing molecules against it, right? So we developed molecules against two dual tyrosine kinase inhibitor, and Dr. Karthikeyan is part of our team who was leading that effort. तो इन्होंने काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स बनाए, हमने टेस्ट किए। तो मेरी स्टूडेंट हनीन, जो कि जॉर्डन में प्रोफेसर है अभी, शी वॉज टेस्टिंग इट। बाकी सारे मॉलिक्यूल्स वर बिहेविंग एग्जैक्टली व्हाट वी थॉट, बट देन शी कम्स रनिंग टू मी। आती है मेरे पास दौड़े दौड़ते, लगता है ये कुछ अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। सो मैं बोला ये तो बहुत, देखते हैं चलो क्या बात है। तो आई वेंट इनटू द लैब एंड दिस इज व्हाट वी सॉ अंडर द माइक्रोस्कोप। इसमें क्या हो रहा है कि सेल्स जो हैं, ऐसा लग रहा है कि खूब सारे बबल्स बन गए हैं उसमें, राइट। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे गन शॉट है, किसी ने गोली मार दी हो सेल्स को, काफ़ी सारे, राइट। या फिर अगर ठीक से अगर आप ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो लगता है कि कुछ बबल्स बन रहे हैं, कुछ वैक्यूल बन रहे हैं, वैक्यूल बनते जा रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एंड दे आर बिकमिंग बिगर एंड बिगर वैक्यूल्स, एंड एट द एंड द सेल्स आर गेटिंग डिटैच्ड एंड दे आर बर्स्टिंग।
ये तो बहुत ही कूल है यार, ये तो बहुत ही अजीब फिनोमेनन है, ऐसा ऐसा हो कैसे रहा है? तो मुझे लगा शायद इसने कुछ गलती कर दिया, या तो कोई मीडिया में इसने कुछ अमीनो एसिड नहीं डाला है या कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं डाला है, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि सेल्स वर वेरी स्ट्रेस्ड आउट। तो जैसे हम कभी फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, अगर आप 10 8 10 दिन खाना नहीं खाओ तो आप वेट लूज करते हो, आपका फैट बर्न होता है, राइट? तो मुझे लगा शायद ऐसा कुछ, वी हैव स्ट्रेस द सेल्स सो मच कि ये लोग खाना पीना नहीं खा रहे हैं तो अपने आप को खाने पीने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको मैंने काफ़ी बार रिपीट कराया, शी रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट मैनी टाइम्स विद ऑल द कंट्रोल्स एंड ऑल द थिंग्स, एंड एवरी टाइम वी विल गेट दिस। सो कोलोरेक्टल कैंसर cells were killed by at a very high IC50 value, but we saw this very unique mechanism, very interesting, right? मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर। तो आप कैसे कुछ चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो? अगर आपको आगे बढ़ना है किसी स्टेप पे, तो व्हाट डू? यू गो बैक टू द लिटरेचर, देन यू स्टार्ट रीडिंग मोर पेपर्स टू फाइंड आउट कि हो क्या रहा है। दैट्स व्हाट वी डिड, एंड वी फाउंड दैट दिस अ न्यू सेल डेथ mechanism called methuosis was just described few years ago by Dr. Maltese, who was also a colleague at University of Toledo. He's retired now, but he coined a new term called methuosis. उसका मतलब होता है you drink to intoxicate, meaning अगर आपको इतना पानी पिलाया जाए और आपका यूरिनरी ट्रैक्ट बंद कर दें, क्या होगा? आपको पानी डालते जाएं, आपकी बॉडी में डालते जाएं तो फट जाओगे, राइट? सेल्स को ऐसे ऐसे ही हो रहा था सेल के साथ। इस प्रोसेस को कहते हैं मेथुओसिस, ठीक है? तो ये जो ड्रग उन्होंने ढूंढी थी, हमारे कोलैबोरेटर हैं एराड, उनके साथ, ये मेम्ब्रेन रफल्स फॉर्म करती है, ठीक है? इससे वैक्यूल बनता है, वैक्यूल एक दूसरे से फ्यूज होता है, बड़ा वैक्यूल बनता है। जब ये बड़ा वैक्यूल बनता है तो इट शुड गो एंड बाइंड टू लाइजोसोम्स। सेल के अंदर लाइजोसोम्स होते हैं विच आर डाइजेस्टिव बॉडीज, वो डाइजेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है तो वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, राइट? एंड दैट इज देयर फंक्शन। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि दे वर नॉट बाइंडिंग टू द लाइजोसोम्स, दैट्स व्हाई दिस वैक्यूल्स वर बिकमिंग बिगर एंड बिगर, दे वर बर्स्टिंग। वी थॉट दैट्स वेरी कूल। लेकिन हमारे केमिस्ट्री टीम के साथ अगर बात करो तो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन तो IC50 कुछ ज़्यादा है, हमें इसको थोड़ा मेहनत करके इसकी IC50 नैनो मोलर में लेके आनी है। तो अ, मैं काफ़ी लोगों से कोलैबोरेट करता हूँ उस एरिया में, बट डॉक्टर कार्तिकेयन, डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, who's going to be here somewhere, they all worked on optimizing the molecule to nanomolar potency. So we came from BAP13 to BAP27, which was very potent in doing this. तो मुझे लगा कि हमने एक नया क्लास ऑफ मॉलिक्यूल ढूंढ लिया है जो कि मेथोसिस की तरह ही काम कर रहा है, विच इज मेकिंग द सेल्स ड्रिंक इटसेल्फ, विच इज़ वेरी कूल, क्योंकि इसके पहले ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थे नहीं इस लिटरेचर में। इट इज़ ऑल्सो वेरी न्यू डिस्कवरी which of course was patented later, but there are many interesting things that happen. पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि मेथोसिस में होता क्या है। दैट इज़ व्हाट वी एज अ साइंटिस्ट आर वेरी क्यूरियस टू नो। सो पहले तो ये बहुत टॉक्सिक है। जैसे आप कैंसर सेल को देते हो तो आप देखो कॉलोनी फॉर्मेशन गोज डाउन, राइट? सारी कॉलोनीज खत्म हो जाती हैं, कैंसर सेल्स खत्म हो जाता है आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट इफ यू incubate colorectal cancer cells with BAP27, within 1 hour, 60 minutes, when there's a lot of vacuoles, these vacuoles fuse together and become bigger and bigger and very big, and then they burst. आप यहाँ नीचे वीडियो के स्नैपशॉट देख सकते हो, हाउ दे बर्स्ट एंड हाउ these fluids actually come out. And if you look at the transmission electron microscopy data, you can see how the vacuoles are forming. कैसे कैसे ये membrane rupture वो जुड़ रही हैं एक दूसरे से और एक बड़ा vacuole बना रही हैं, right? That is how the big vacuoles forming in the burst. लेकिन as a scientist हम किसी को बताएं कि ये हमने देखा है, they don't get super impressed, कहते हैं ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, but you have to go and prove more. ओके, सो हमें वापस लैब में जाते हैं, एंड वी हैव टू डू मोर मॉलिकुलर मैकेनिज्म्स टू प्रूव द सेम थिंग over and over again by number of different processes, and I'm sure that some of you already do this. तो हमें माइक्रोस्कोपी में देखना पड़ता है वैक्यूल्स कैसे बन रहे हैं और बाहर जो भी चीज़ें हैं उसको अंदर कैसे लेके आ रहा है। सो मैक्रोपिनोसोम्स बन रहे हैं, फिर हम मार्कर्स देखते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वेस्टर्न ब्लॉट्स हैं, हाउ दिस RAP7 and RAP5, which is late endosomal markers, are going up as you increase the concentration, they are going up, right? That shows कि मैक्रोपिनोसाइटोसिस हो रहा है। इस चीज़ को हम और भी तरीके से देख सकते हैं, हमने देखा, बहुत तरीके से देखा, हर तरीके से समझ में आया कि मेथोसिस तो डेफिनेटली हो रहा है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेटा देख रहे थे तो हमने देखा कि अगर सेल के अंदर बहुत जूम करके देखा जाए तो देर इज़ अ लॉट ऑफ
लाइजोसोम्स जो थे, जो पहले खा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं साइज में, 15 to 20 fold they were increased in size. Okay, and if you look inside the lysosomes, there are a lot of double membranous bodies. बोला ये तो बहुत ही अजीब फिनोमेनन है। हम तो सोच रहे थे सिर्फ अपने आप को पी रहा है कैंसर सेल्स, एज यू गिव दिस ड्रग दे वर लाइक ड्रिंकिंग themselves to death. Not only that, it looks like they're eating themselves also. अपने को खा भी रहा है, which is very unique. इसके पहले किसी ने सोचा नहीं था इसके बारे में। तो इसके पहले आप समझो कि सेल अपने आप को खाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑटोफेजी, सेल्फ ईटिंग process. And what, as I said, if you fast for a long time and there is lack of nutrients, or there are some signaling pathway that is activated, या फिर कोई कोई ऑर्गनली काम करना बंद कर दे, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्जी apparatus, कोई भी ऑर्गनलीज काम करना बंद कर दें, देन सेल्स उसको डाइजेस्ट कर लेता है। कैसे करता है? दे फॉर्म दिस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑटोफैगोसोम्स। ऑटोफैगोसोम्स ये इसको एनगल्फ कर लेते हैं, बड़ा बन जाते हैं, दे गो एंड बाइंड टू द लाइजोसोम्स, इट इज कॉल्ड ऑटोफैगोलाइजोसोम्स, और फिर दे रिलीज सम एनर्जी, बाई प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं ताकि सेल्स उसको यूज करके नया सेल बना सके। तो ऑटोफेजी इज अ सेल सर्वाइवल प्रोसेस। ऑटोफेजी से सेल सर्वाइवल होता है। तो हमें लगा यार तो समझ में नहीं आई बात कुछ। हमने ड्रग बनाई, कैंसर सेल पी रहा है, अपने आप को खा रहा है अपने आप को, लेकिन उसके बाद मर जा रहा है, राइट? यहाँ पे तो ये ऑटोफेजी सेल सर्वाइवल है, तो समझना बहुत ज़रूरी था कि हो क्या रहा है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेल डेथ मैकेनिज्म ऑटोफेजी। देन वी स्टार्टेड लुकिंग एट इट्स मॉलिकुलर मैकेनिज्म। पहले कंफर्म करते हैं कि ऑटोफेजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखा, नो बडी विल बिलीव इफ वी कैन एक्चुअली नॉट शो इट। एंड वी डिड बंच ऑफ एसेज, LC3B2 काफ़ी ओवर एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑटोफेजी हो रहा है। देन वी डू अ लॉट ऑफ मोलिकुलर मैकेनिज्म टू रियली शो कि क्या सिग्नलिंग कैस्केड है, कि डेफिनेटली ऑटोफेजी हो रहा है। लेकिन ऑटोफेजी सेल को मार रहा है कि नहीं मार रहा है, उसके लिए और ऐसे करना पड़ता है। अगर आप ऑटोफेजी इंड्यूसर देंगे जैसे रापामाइसिन, तो वो और ऑटोफेजी क्रिएट करेगा और सेल को ज़्यादा मार देगा, एंड वी कैन सी दैट सेल्स वर डाइंग मोर। लेकिन अगर आप ऑटोफेजी को इनहिबिट कर देंगे, दूसरा इनहिबिटर देके, जैसे कि 3 मिथाइल एडेनिन, तो सेल सर्वाइव करेगा, which actually tells you कि autophagy is necessary for cell death. So methiosis is necessary for cell death, autophagy is necessary for cell death. लेकिन हम यहाँ नहीं रुकते, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं just to prove this point, ताकि साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे पास बहुत सारा डेटा होना चाहिए, बहुत तरीके से होना चाहिए, और there are some minor things that we have to think to make sure कि we are saying the right things. Okay, so long story short, हमने क्या देखा? हमने जब बैप्ट कंपाउंड दिया, तो कैंसर सेल्स वर फॉर्मिंग these vacuoles which were becoming bigger and bigger and bigger, and they were killing the cancer cells. At the same time autophagy was going on, but autophagy was leading to cell death. तो इसके पहले कि हम कुछ और करते, हमने क्या किया? सबसे पहले इनकी शादी करा दी। तो मेथोसिस और ऑटोफेजी की शादी करा दी, तो क्या क्या बना? अभी आपको बोला था, आपको बोलने के लिए बोला था मैंने, क्या बना? मेथोफेजी, राइट? So we identified this new type of cell death mechanism by this new class of compound, which is good. लेकिन आपको मैंने पहले बताया कि दो मेन तरीके के सेल डेथ होते हैं, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो वी वांट टू नो कि सेल्स को मार कैसे रहा है, अगर मार रहा है तो just so that you know कि 90 to 95% of the drugs that are out there in the clinic as an anti-cancer agent, they kill the cancer cells through apoptosis. तो सबसे पहला जो हमारा ध्यान जाता है किसी ड्रग को जब हम बनाते हैं कि यार पहले, सबसे पहले अपोप्टोसिस तो चेक करना पड़ेगा कि अपोप्टोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट अपोप्टोसिस तो हो ही रहा होगा, एंड दे जस्ट कीप ऑन ट्राइंग टू प्रूव दैट, राइट? So we started looking into apoptosis, and we learned that it's a non-apoptotic cell death mechanism. क्यों? cells shrink करने की बजाय बड़ा हो रहा है। apoptosis में cell shrink करता है, nuclear condense करता है, but we are not seeing any nuclear condensation. In fact, cells nucleus are very happy and healthy. Okay, this shows that's non-apoptotic cell death mechanism, but we have to, as I said, prove with more experiments. So then we look at the molecular mechanism. Caspases are very important, and we saw that it is a non-apoptotic cell death mechanism because there is no cleavage of caspases. Bax or back BCL2, these marker होते हैं apoptosis के, सब चेक किए। और एक ड्रग होती है जो कि पूरे apoptosis मशीनरी को बंद कर देती है। तो अगर आप उसके साथ इंक्यूबेट करेंगे, तो यहाँ पे देखा हमने कि वो सेल को रेस्क्यू नहीं कर पा रहा है। So ZVAT cannot rescue the cell death, which also tells you it's a non-apoptotic cell death mechanism.
देन वी वांट टू चेक कि और किसी तरीके से सेल्स मर रहा है क्या. देयर इज वन मोर सेल डेथ मैकेनिज्म दैट इज डिस्क्राइब्ड इन लिटरेचर कॉल्ड नेक्रोप्टोसिस. बट हमने जब नेक्रोस्टैटिन जो कि इनहिबिटर है नेक्रोप्टोसिस का साथ में दिया, तो इट डिड नॉट रेस्क्यू द सेल डेथ, विच सजेस्ट दैट इट्स अ नॉन नेक्रोप्टोसिस सेल डेथ. फिर इसी तरह से हम बहुत सारे जितने भी अलग अलग तरीके से लोगों ने डिस्क्राइब किया है लिटरेचर में that this is how the cancer cell should die, we have to go and check on all those mechanisms. So then we looked at the endoplasmic reticulum. कोई भी endoplasmic reticulum में stress नहीं था, mitochondria भी ज़्यादा swell नहीं कर रहा था, reactive oxygen species भी ज़्यादा नहीं बन रही थी, which is one mechanism to kill the cancer cell. That beta tubulin, तो बहुत सारे drugs जो हैं beta tubulin inhibitor होते हैं, तो ये beta tubulin को भी बहुत ज़्यादा affect नहीं कर रहा है, तो it's non beta tubulin affected. और RAS और P53 mutation. Okay, those are the two main mutation that happens in colon cancer that leads to colon cancer formation. हमने कई सारे सेल मॉडल ढूंढे जो कि P53 और KRAS के होते हैं, बट मेथुआफजी सब में हो रहा था. ठीक है, इसका मतलब है कि मेथुआफजी इज इंडिपेंडेंट ऑफ RAS एंड P53 स्टेटस. RAS एंड P53 म्यूटेशन होता रहे, बट ये ड्रग उन सारे सेल्स को मार देगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो जो पेशेंट्स उस म्यूटेशन से सफ़र कर रहे थे वो भी इससे ससेप्टेबल हैं, वो भी से मर रहे हैं, राइट. देन वी लुक्ड एट कि ये तो बहुत अच्छा है, हमने एक नया ड्रग ढूंढा जो कि सेल्स को पी भी रहा है, खा भी रहा है. मेथुओसिस एंड ऑटोफेजी एंड इट इज किलिंग द सेल थ्रू मेथुओफेजी, एंड वी अंडरस्टैंड दैट्स नॉन अपोप्टोटिक सेल डेथ मैकेनिज्म. बट लैब में हम लोग काफ़ी एंगल से चीज़ों को देखते हैं. तो एक सबसे बड़ी समस्या है ड्रग रेजिस्टेंस में, जो जो मैंने शुरू में बताया आपको कि ड्रग रेजिस्टेंस में अपोप्टोसिस कॉजेज मेजर प्रॉब्लम टू ड्रग रेजिस्टेंस. सो इन कोलोन कैंसर almost all the drug kill the cancer cells through apoptosis, right? तो सबसे पहले हम देखना चाहते थे कि ये apoptosis resistance को रिवर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है. एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द डेटा, मेरा डेटा में जाने का बिल्कुल इसमें पर्पज़ नहीं है, राइट. माई पर्पज़ इज़ कि आप ये स्टोरी को समझें, बड़े पिक्चर को देखें और समझें कि कितना एफर्ट जाता है एक मॉलिक्यूल को डिस्कवर करने में, डेवलप करने में, और यहाँ तक लाने में कि उसको प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल स्टेज पे ले जा सकें. ठीक है, और आप जैसे स्टूडेंट्स ही मेरे लैब में काम करते हैं, वी ट्रेन देम एंड वी मेक श्योर दैट दे कैन अंडरस्टैंड ऑल these प्रोसेसेस. ओके. So we developed number of single and double mutated colon cancer cells, और हमने देखा कि apoptosis को रिवर्स कर रहा है रेजिस्टेंस को. और हम बहुत अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, हम अलग अलग कैंसर को साथ में कॉम्बिनेशन थेरेपी में दे सकते हैं. एंड व्हेन वी गिव इन कॉम्बिनेशन इट वाज कॉजिंग सिनर्जिस्टिक टू स्ट्रॉन्ग सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, मतलब कॉम्बिनेशन में बहुत और भी इफेक्टिव हो रहा था, राइट. देन सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि ये सब तो ठीक है, आपने एक नया नया ड्रग खोजा जो कि बहुत इफेक्टिव है, इट इज़ किलिंग द कैंसर सेल्स थ्रू अ वेरी यूनिक मैकेनिज्म मेकिंग द सेल्स मेथुओसिस एंड ऑटोफेजी. क्या ये सेफ है? क्या हम पेशेंट्स को दे सकते हैं? उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है? सेल्स में टेस्ट करना पड़ता है, एनिमल्स में टेस्ट करना पड़ता है. तो वही किया हमने. हमने अलग अलग तरीके के नॉर्मल सेल्स पे टेस्ट किया, हमने माउस माउस पे टेस्ट किया, and we did not see any change in their weight or their behavior or anything. We tested on zebra fish and we did not saw any toxicity in zebra fish. तो इसका मतलब है कि ये सेफ है आगे बढ़ने के लिए क्लास ऑफ मॉलिक्यूल. तो हमने और भी टॉक्सिसिटी एक्सपेरिमेंट की, जिसमें हमने ब्लड में टॉक्सिसिटी देखी, ऑर्गन अलग अलग ऑर्गन में टॉक्सिसिटी देखी, एंड वी डिड नॉट फाइंड टू मच ऑफ टॉक्सिसिटी, एंड दैट गेव अस मोर कॉन्फिडेंस कि दिस इज अ गुड क्लास ऑफ मॉलिक्यूल टू मूव फॉरवर्ड विद. ठीक है, तो अभी हम इस पे और काम कर रहे हैं, जिसमें हम एनिमल स्टडीज़ कर रहे हैं, जिसमें से पेशेंट से ट्यूमर निकाल के एनिमल में डाल के इसका इसका इफेक्ट देख रहे हैं. ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन एज अ साइंटिस्ट दिस इन दिस कॉन्फ्रेंस आई डोंट वांट टू टेल यू कि यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है. कहानी अब यहाँ से शुरू होती है कि ये सब तो हो रहा है, बहुत ही अच्छा फिनोमेनन आपने देखा, लेकिन ये हो कैसे रहा है, क्या टारगेट क्या है इसका, राइट. दैट्स व्हाट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन दैट वी वांट टू आंसर. तो हम लोग बहुत सारा जीनोमिक एनालिसिस करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं, हमने वो किया, तो उसमें कुछ आंसर मिलता है, फिर उसको लेके हम लोग फोकस करते हैं. नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल अबाउट ऑल दिस pathways and everything, but just to show you that this, when we find the target or when we have some idea that this is the pathway that may be involved, we try to move forward with that. At the same time, we did some kinome analysis and then we came up with some really interesting targets that we are trying to understand. तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है अभी, ये लगता है मुझे कि हमें मुझे नहीं हमें लगता है कि ये मल्टी टारगेटेड एजेंट्स हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू डेवलप मोर ऑफ दीज एजेंट्स, राइट. बट व्हेन यू लुक एट द लाइजोसोम्स, अगर आप लाइजोसोम में जूम करके देखोगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है हमें.
ये लाइसोसोम है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो येलो पार्टिकल्स हैं ये नथिंग बट दीज आर ऑटोफैगोसोम्स। ओके, और ये ग्रीन जो है लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं। तो दिस ऑटोफैगोसोम्स वर कलेक्टेड सो मच, लेकिन ये बाहर नहीं निकल रहे थे सेल से। इसका मतलब है कि लाइसोसोम को जो एनर्जी डाइजेस्ट करना था और एनर्जी निकालना था वो प्रोसेस ब्लॉक हो रहा है, मीनिंग लाइसोसोमल क्लियरेंस इज बीइंग ब्लॉक्ड। तो कोई तो एक जो सेल डेथ प्रोसेस है जो लाइसोसोम और न्यूक्लियस को एक दूसरे में होम्योस्टैसिस में कंटेन करता है वो अफेक्ट हो रहा है, राइट? सो देन वी स्टार्टेड लुकिंग इन दैट pathway, and that pathway is called mTOR TFEB pathway. Okay, and we did bunch of assays to really see that BAP actually affects TFEB nuclear pathway. I'm not going to go in the detail, but just long story short that it is affecting that pathway. We do not have a very clean, clear target to tell you right now, but this is what we have so far. Okay, so मोटी मोटी कहानी ये है कि अगर आपने ड्रग दिया तो कैंसर सेल्स को ऑटोफेजी होता है, सेल सर्वाइवल होता है, लेकिन जब आप बैप्ट कंपाउंड देते हो तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लॉट ऑफ वैक्यूल्स, वी कॉल इट मेथुओसिस। एट द सेम टाइम देयर इज ऑटोफेजी इज बीइंग डिसरप्टेड बिकॉज लाइसोसोम क्लियरेंस ब्लॉक होता है बिकॉज ऑफ दिस mTOR TFEB सिग्नलिंग पाथवे। ये होम्योस्टैसिस यहाँ ब्लॉक होती है विच बोथ लीड्स टू सेल डेथ, व्हाट विच वी कॉल एज मेथुओफेजी। कुछ कुछ समझ में आया? चलिए, अभी कहानी यहाँ पे है कि हम कई सारे मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर केमिस्ट्री का अलग अलग हम सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज करें तो व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग इन दिस एरिया। हमें काफ़ी आइडिया पता चल गया कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सिर्फ ऑटोफेजी कर रहे हैं, जो सिर्फ मेथोसिस कर रहे हैं, और जो तो कि दोनों कर रहे हैं। व्हाट वी कॉल देम एज, आवाज़ ही नहीं आ रही है, मेथोफेजी, एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन सो फार, और हम इसके सेल डेथ प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई विल स्टॉप हियर क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज वी आर वर्किंग ऑन इन सेल डेथ एंड आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट, बट समय कम है। आई नो कि डॉक्टर कार्तिकेयन अभी मुझे भगाने वाले हैं यहाँ से। इसके पहले कि वो करें मैं सोचता हूँ कि मैं ही विदा ले लूँ यहाँ से। तो लेकिन अगेन I have a lot more technologies I can talk about, but I don't think we have time. Important thing about this conference, and I want to take 1 minute of that, is the conference is for the students. Certainly, faculty always benefit from talking to the speakers and invited guests, and they will come and talk to us, and that is good. That's what we want. But I really, really hope that you as a student don't sit in the back. Don't come here to just कि हमें आना था, टीचर ने कहा है क्लास के लिए तो करना है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। Of course, learn all these things, but make sure that you're interacting with the speakers. You're making those connections, and these connections go a long way. Okay, we are really, really here for you, and that is our goal. A lot of eminent scientists are here. Just make sure that we can actually, see how our new workforce. How can we encourage them? How can we excite them so that they are more research focused rather than just being on the theoretical side of things. But to do that, you have to be exposed. You have to reach out. You have to know what is the process. How can we publish more? How can we develop our institution to be one of the best institution in the nation? आप चाहे जहाँ से भी आए हो, चाहे आप BU से हो या आसपास के फार्मेसी स्कूल से हो, doesn't matter. You are all the same for us. You are the next generation of scientists, right? So I really hope that you can take this opportunity to learn more, interact with more people, and grow from here. Thank you so much, and I will be happy to take any questions. Thank you. I'll take the code. I think some people have questions, but I will hope that you can take the mic and introduce your name first and then ask the question. Dr. Karthikeyan, can you pass on the mic? Yes, First of all, go ahead. good morning, sir. Sir, my question is, तुम so my गौतम गोत्र के हो? yes, sir. हाँ, आगे बताओ।
Sir, my question is, sir, my name is Dheeraj Tripathi and my Gotra is Gautam Gotra. And but सर अभी तक जो कैंसर के केसेस देखे जा रहे हैं उन केसेस के अंदर पेशेंट कीमोथेरेपी के बाद एंड अदर प्रोसेस के बाद मेनली अभी तक वो एपोस्टोसिस से उसके अंदर जो ये प्रोसेस चल रही है मेटाबॉलिज्म हो रही है उसकी वजह से वो पतला हो रहा है मेनली उसकी बॉडी जो है खत्म होती जा रही है लेकिन सर मैं आपके प्रोसेस को अगर मैं फ्यूचर लेवल पर सोचने की कोशिश कर रहा था तो मुझे लगा कि इस प्रोसेस में ऐसा तो नहीं कि पेशेंट मोटा होके मर जाएगा क्योंकि यहाँ पर सर यही अब मेरा क्वेश्चन है सर आपसे क्वेश्चन आप समझे क्या क्वेश्चन है? पहले तो ये समझना है कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अगर सही नहीं तो आंसर सही कैसे होगा? तो इनका कहना है कि पेशेंट जो दवाई लेता है या एंटी कैंसर ड्रग लेता है उससे अपोप्टोसिस हो सकता है, और अपोप्टोसिस से कैंसर आदमी पतला हो सकता है। पहली बात, अपोप्टोसिस से पतला होने का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा होता तो जितने भी हमारे जैसे मोटे लोग हैं वो अपोप्टोसिस की दवाई ले लेके पहले पतले हो लेते, फिर बाकी बाकी चीज़ें देखते हैं। ऐसा नहीं होता है, राइट? वो टॉक्सिसिटी ज़रूर होती है, एंड टॉक्सिसिटी से बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। जो कीमोथेरेपी कैन 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 प्रोड्यूस वेट लॉस फ्रॉम नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स. Apoptosis could be one of them, but it plays a very minor role in that sense, right? Um, so whether this medication will cause person to grow fat या कोई और side effects होगा, I think the right question should be what would be the side effect of these medications. जो हमारे पास अभी clinically approved drugs हैं, okay, there are chemotherapies, there are immunotherapies. Most of them actually affect your immune system क्योंकि rapidly dividing cells को वो लोग target करते हैं. जो भी चीज़ें rapidly dividing होती हैं, they actually get affected. At the same time, some drugs can have different side effects. For example, some can target your liver, kidney. Hair loss is alopecia is a bigger problem with certain traditional drugs. Newer class of drugs have a lot of rashes and other indications and other problems. What toxicity we will see with these drugs in patients, I don't think we are there yet. अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, बहुत काम करना बाकी है, बहुत ही अर्ली स्टेज पे हैं। पेशेंट मोटा होगा या पतला होगा या क्या होगा, वहाँ तक नहीं है। अभी हम सिर्फ सेल्स पे टेस्ट किए हैं इस चीज़ को, ज़ीब्रा फिश पे वी हैव टेस्टेड इट, एंड वी हैव टेस्टेड इन रोडेंट्स, माउस मॉडल्स पे, राइट? सो इसके बाद वी हैव टू डू मोर टॉक्सिसिटी स्टडीज, एंड देन होपफुली इट विल रीच टू पेशेंट्स, एंड देन वी विल लर्न मोर अबाउट दो साइड इफेक्ट्स। बट इवन बिफोर इट रीचेज दैट, एटलीस्ट जो हमें प्रिलिमिनरी डेटा है उसमें ऐसी कोई टॉक्सिसिटी समझ में नहीं आई है हमें। But again, these are not mammalian models. So, I mean, we don't really know if they would have something very similar to other drugs or not. But क्वेश्चन अच्छा है कि साइड इफेक्ट्स क्या है इसका, ब्रॉडली उनका क्वेश्चन ये था। ओके, सेकंड क्वेश्चन। Good morning, sir. हाँ My name बताओ। is Bhuneshwar Tripathi. हम्म। I came from Bihar. Sir, my question is मोथियोफेगी जो प्रोसेस है सर, जिसके वजह से आप नया जो मॉलिक्यूल्स डेवलप करना चाहते हैं, इसमें आपने दिखाया कि ऑटोफेजी एंड सेल ग्रोथ बोथ प्रोसेस आर साइमल्टेनियसली वर्क। तो इससे क्या सर दोनों एक साथ चलते हैं, या अगर हम ऑटोफैगी की बात करते हैं तो वहाँ पे सेल ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब होता है, या हम सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो वहाँ सेल नेक्रोसिस की बात हम नहीं कर पाते? देखिए, कैंसर सेल्स जब मारते हैं ना तो हम सेल ग्रोथ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? लेकिन जब ऑटोफेजी की हम बात करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको एक्चुअली। तो ऑटोफेजी में क्या होता है, ताकि सारे बच्चे समझें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटीज। एक कोई प्रोसेस नहीं होती ऑटोफेजी का। ये जो कार्टून डायग्राम है ना, ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है ऑटोफेजी बताने का। बट ऑटोफेजी इतना बड़ा एरिया है कि इस पे जर्नल्स हैं, कई सारी बुक्स हैं, तब जाके आप समझ पाएंगे ऑटोफेजी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस में क्या होता है कि कहीं कोई सिग्नलिंग पाथवे ट्रिगर होता है, दैट लीड्स टू नंबर ऑफ अदर पाथवेज, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम को जाके इसे लाइसोसोम से बाइंड करना पड़ता है। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो आपने कोविड में काफ़ी सुना होगा, वो उस प्रोसेस को ब्लॉक करती हैं। तो ऑटोफेजी यहाँ ब्लॉक हो गया, राइट? ऑटोफेजी ऑटोफेजी अगर ऑटोफैगोसोम लाइसोसोम से बाइंड हो गया, ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑटोफेजी हो रहा है।
क्योंकि सारे मार्कर्स दिख रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, वो ऑटोफेजी हो रहा है, लेकिन ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, तो ये जो सेल्फ सर्वाइवल वाला जो प्रोसेस है, ये होगा ही नहीं। हमारे केस में यहाँ पे इनहिबिट हो रहा है, यहाँ से क्लियरेंस ही नहीं हो रही है, जो कि हमें समझ में आया अभी तक। जब क्लियर ही नहीं करेगा कोई, जितने भी ये जो डाइजेस्ट करके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या एनर्जी या रिडॉक्स मटेरियल हैं, अमीनो एसिड्स या जो भी हैं, शुगर्स हैं, वो अगर क्लियर नहीं होगा, तो सेल्स यूज़ कैसे करेगा अपने आप को ग्रो करने में या सेल प्रोलिफरेशन में या सेल डिवीजन में? तो ये जो होम्योस्टैसिस है, cell lysosomal clearance that is getting blocked. Okay, that is what is happening. So autophagy is not getting complete. Autophagy is a lengthy process, and autophagy can seem that it is going up because उसके पहले के सारे processes हो रहे हैं, लेकिन जो लास्ट स्टेप है वहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। तो तब भी लगेगा अरे बहुत सारा ऑटोफेजी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऑटोफैगोसोम्स बन रहे हैं। सेल तो अपने आप को खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, तो ऑटोफेजी तो हो रहा है, बट खा के जो उसको करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा, उसके पहले सेल बर्स्ट हो जा रहा है मेथुओसिस से। तो दैट इज वाई इट्स मेथुओफेजी। मेथुओसिस भी हो रही है, ऑटोफेजी भी हो रही है, मेथुओफेजी हो रहा है। ओके, आई होप कि आपने कुछ नया सीखा, एटलीस्ट एक नया टर्म सीखा। क्वेश्चन? So this will be the last question. ओके, सर इन द मैथोपॉजी, सर आपने अभी सर जो क्वेश्चन इससे पहले पूछा था मैंने, वो जूम आउट था बिल्कुल। अब मैं जूम इन करके पूछता हूँ सर इसी क्वेश्चन को आपसे। सर अगर एक सेल को देखा जाए तो वो वैक्यूल उसका बड़ा हो रहा है, तो मेनली वो जो सेल हो रहा है उसका वैक्यूल बड़ा हो रहा है, तो वो साइज में बड़ा हो रहा है। और यही यही जो ड्रग है वो टारगेट करेगी उसके अदर सेल्स को भी, उसके आसपास के सराउंडिंग सेल्स को, तो वो भी जो है उनके वैक्यूल्स का साइज भी इंक्रीज होगा। और ये प्रोसेस तो पहले से ही इनहिबिट हो रही है, क्योंकि क्लियरेंस नहीं हो रही। इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन, जो आपने किडनी की बात की थी, रिटेंशन जो है बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेथड में सर हो ही रहा है सर। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो कई तरीके से समझने की ज़रूरत है क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग बहुत सोचते रहते हैं इस बारे में। इन्होंने एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, शायद हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि क्या पूछना चाहते हैं। इनको पता नहीं है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें, बट आई टेल यू। सो व्हाट इज ट्राइंग टू आस्क इज कि वैक्यूल बन रहा है, एक सेल में तो बन रहा है, बाकी सेल्स में बन रहा है, कितना एक्सपेंशन हो रहा है और क्या क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा है कुछ। दैट इज़ ट्रू। तो वैक्यूल्स बन रहा है, अलग अलग सेल्स में बन रहा है। कुछ सेल्स पहले मर जाते हैं, कुछ सेल्स थोड़ी देर में मरते हैं, तो वो तो होता रहता है, राइट? आई मीन डिपेंडिंग ऑन हाउ विच सेल्स इज मोर सेंसिटिव। दैट हैपेंस इन ऑल द कैंसर सेल्स व्हेन यू गिव अ ड्रग। The drug is not going to kill all the cells in one go. Slowly reduces the tumor. तो आपने देखा होगा कीमोथेरेपी कितने महीनों तक चलती है, सालों तक चलती है, राइट? टू रिड्यूस दैट। क्यों? अगर वैसा होता कि एक साथ ही दिया और सारे सेल्स में सारा इफेक्ट हो गया और सारे सेल्स एक साथ मर गए, तो क्या होगा? ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, बट हम काफ़ी सोचते रहते हैं इस बारे में कि वैक्यूल्स बन रहा है। अगर वैक्यूल्स बन रहे हैं या सेल्स फट भी रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो रहा होगा सेल्स में? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर जब सेल्स मर रहे हैं, तो जो कैंसर सेल्स हैं, अगर वो बर्स्ट हो रहे हैं, तो जो कैंसर के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो हो सकता है दूसरा कैंसर कॉज कर दें दूसरी जगह जाके, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट? सो वी डोंट नो द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन ऑनेस्टली, वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट दिस प्रोसेस। ओके, बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाई डोंट वी टॉक? अच्छा, ठीक है, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एंड देन इफ एनीबडी हैज क्वेश्चन, आई एम हियर, सो प्लीज फील फ्री टू टॉक टू मी आफ्टर दिस। सर माय नेम इज वासुदेव द्विवेदी। जी। जैसा कि सर आपने कहा कि सर एंटी कैंसर जितने भी ड्रग्स हैं सर वो इनहिबिट हो जाते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की वजह से, क्योंकि इनहिबिटर्स अभी तक बने नहीं है पूरी तरीके से एफडीए के अप्रूव्ड, जो भी है एबीसी ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो सर जब बने नहीं है वो इनहिबिटर्स, तो फिर ये ड्रग सर कैसे काम कर सकती है फिर? हाँ, क्योंकि ये एबीसी ट्रांसपोर्ट, मैंने दो कहानी आपको बताई। एक तो पहले एबीसी ट्रांसपोर्टर की कहानी बताई, Yes, जो कि हमने बहुत कोशिश की, अभी तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है। तो वो जैसे अगर कैंसर बहुत बड़ा है, एक पूरा एक गोला ले लीजिए, राइट? yes, sir. तो उसमें अगर वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई कि कौन कितना कितना पोर्शन होगा, लेकिन एबीसी ट्रांसपोर्टर इज ओनली वन फैक्टर फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है? तो एबीसी ट्रांसपोर्टर पे हमारा काम चल रहा है कि काम क्यों नहीं कर रहे हैं ड्रग्स, राइट? लेकिन एक नया प्रोसेस हम लोगों ने डेवलप किया वाइल वी वर लुकिंग एट ड्रग रेजिस्टेंस। एक नया डिस्कवरी, एक नया टेक्नोलॉजी हमने डिस्कवर की, जो कि अलग है ट्रांसपोर्टर से। हमने इसमें ट्रांसपोर्टर का भी कुछ देखा है, बट वी डिड नॉट टॉक अबाउट इट।
लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट एरिया है, ठीक है? चलिए, thank you so much, and I really enjoyed my talk and talking to you all. And this hall was full and very quiet. Thank you very much, That's sir. nice. It was Thank a you. very informative session. Thank you very much, sir, for such a profound word, profound talk delivered by you, sir. Each and everyone have enjoyed because this session has been bilingual in language. So I think the answer have been given in Hindi and English also. So the guys sitting behind rows, they are enjoyed and they got the things what actually the cancer is. So for next lecture talk, we have eminent lecturer Professor. Okay, sir. So before calling next eminent speakers, we have a felicitation. So for the felicitation, I would like to invite Professor C. Karthikeyan to please felicitate to Professor Amit Kumar Tiwari sir to present a certificate and memento to him. Thank you very much, sir. Now, I would like to invite Professor Sunil Kumar Prajapati, sir, to please to present a certificate and memento to our chairperson, Professor C. Karthikeyan, sir. Thank you very much, sir. The next lecture to be delivered by Professor J.B. Ramapuram, sir, and the session will be chaired by Professor L. Lalwani, sir. So before inviting Professor J.B. Ramapuram, sir, I would like to invite Professor Lalwani, sir, to please come on stage and brief about Professor J.B. Ramapuram, sir. A very good morning to all, and hope you are enjoying all the sessions. And this is the Mahasagar well, all the participants of the different countries has been gathered and gaining the knowledge, full flash of knowledge. And for the betterment, we are providing all the facilities, and from the various resources, we are providing the same platform. Again, first I welcome all the speakers and welcome all the students from the different parts of the India. They gathered here and to gain the knowledge and फुल फ्लैश आपको एक ही जगह पर सारे प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा नॉलेज के भंडार यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं. This is not a sagar, that is the Mahasagar. You are gaining full flash of knowledge. So thanks for all students, all invited speakers, and all the organizing committee. And first I'll call you to Dr. Jayachandra Babu Ramapuram. He is an eminent professor and graduate program officer at the Department of Drug Discovery and Development, Harrison School of Pharmacy, Auburn University. Sir has received his B Pharma from the University of Madras and M.Pharm, Master of Pharmacy in the branch of Pharmaceutics, and PhD degree in the Pharmaceutics from the Indian Institute of the Technology, Varanasi. Varanasi, India. He has over 24 years of the academic and industrial experience in the formulation and drug discovery research. Sir has gained substantial experience in the pharmaceutical and biomedical analysis of the dosage form and drug discovery systems. As a principal investigator, he assisted the pharmaceutical companies in formulating water-soluble drug molecules belonging to the different therapeutic categories. For this,
Sir has utilized innovative drug discovery platforms such as the nanoparticles, nanoemulsions, cyclodextrin complexes, and microneedle patches and melt extrusion systems, and amorphous solid for the drug delivery across oral, ocular, transmucosal, and transdermal route. Sir has his lab has been supported by the federal, private, and local funding for over $3 million and published over 200 peer-reviewed manuscripts. So give a big clap for the sir. Sir is a very eminent professor and the postdoc. Further, in the continuation of the study, उन्होंने अपनी study को रोका नहीं and he trained further for the postdoc 14 PhD and 4 MS students and trained 20 professionals and undergraduate students in the last 16 years. So there's a big achievement for the sir. I really welcome to the sir and the eminent professor and he is full fledged of the knowledge. उनके पास ज्ञान का बहुत अधिक भंडार है जो आपका सर जितना प्रोवाइड करें उसके लिए बहुत कम है, बहुत कम है और बहुत कम है. So I especially welcome to the sir and come to give the deliver lecture. Thank you, sir. Sir, आप share, please. बहुत धन्यवाद सर. That is overwhelming introduction. Thank you. Namaste everybody. मैं थोड़ा हिंदी में बात करने कोशिश करता हूँ. कुछ गलती हो गए तो माफ कर देना. अच्छा लगेगा सर. थोड़ा मजाक भी ले सकता है. जी. मैं जल्दी बात करने की कोशिश करता हूँ. We'll try because time is short. Let me proceed faster without wasting time. Okay. First of all, thank you very much. I'm very much honored to be here. Thank you very much for the invitation, and I appreciate and thank organizers for giving me the opportunity. And thank you all for your kind attention and patience listening to these seminars. And what I'm going to talk today will be slightly different. I would say very different from what Dr. Tiwari has provided. I'm going to talk about dosage form development, formulation development. मैंने बहुत एरिया में काम किया. Tablets, capsules, injections, liquid dosage forms, and that was my area. And what I'm going to share my knowledge, some of the work that is going on in our lab, which is related to 3D printed drug delivery systems. So, slide one slide. Oh, slide. Pointer. Got it. This is only for pointer. Thank you. Okay. 3D printing can be used for making गुड़िया बना सकता है 3D printing से. दवा क्यों नहीं बना सकता है? देखिए, we can make there is one product which is already available in the market called Spritam, levacetam, anti-epileptic drug है वो. So which is already introduced into the market, which is the evidence of success of 3D printing technology. So we are going to talk about, I'm going to talk about some information of work that we have done in our lab. So what is 3D printing, first of all? 3D printing, वो कार्टून में देखिए जैसा वो स्ट्रक्चर बना रहा है उसी तरफ का टैबलेट बना सकता है, कैप्सूल बना सकता है, वेजाइनल रेक्टल सपोजिटरी बना सकता है, जो भी स्ट्रक्चर है, ट्रांसडर्मल फिल्म बना सकता है, ओरल स्ट्रिप बना सकता है, जैसा वो दिख रहा है, लेयर बाय लेयर अक्यूमुलेट कर सकता है, meaning that you can deposit powder
layer by layer until the structure is built. वो structure कैसा define कर सकता है? There is a software called CAD software, computer aided design software हो सकता है, CAD. So जो भी structure हम define करता है वो printer से create कर सकता है. Conventional manufacturing uses a tablet compression machine or capsule machine, whatever the machine that you use in making large scale industry, which can be made now using the printer. Printer से हम कागज में print करता है, वो you call it as two-dimensional printing. And when you build a layer by layer accumulate कर सकते हैं powder का, इसी के लिए उसका करता है three-dimensional printing. उसका additive manufacturing भी कर सकता है. Same meaning actually. 3D printing also called as additive manufacturing. So कैसा powder build करते हैं ना, how the powder is bond to each other. Particles have to bond to each other to get the structure, right? What do you use? Use some kind of a resin or some kind of binding agent. Tablet में जो binding agent use करता है, उस तरफ का binder add कर सकता है. Not only that, you also use some kind of energy, laser energy, thermopiezo electric energy, so to keep the particles together to build the structure. Tablet को हमको binding agent use करता है, compression force use करता है, tablet structure बनाता है. Same concept here also. I'm not going in detail in terms of the technology. I'm not an expert in making the 3D printer machine. I'm not also an expert in designing the software. I'm only the user of the machine. जैसा हम लोग शॉप को जाके प्रिंटर खरीद के अटैच करते हैं, कागज के जैसे प्रिंट करता है, उस तरह I am a user of the 3D printing machine. I do not belong to other areas of engineering. So this is a technology that we utilize in pharmacy. So as you can see from the literature, there are a lot of papers are being published in this area, especially in the recent years. So the growth is exponential because of the success of this area in terms of products coming out into the market. There are different type of 3D printing technologies. जो blue color में दिखाया, उसका बोल सकता है deposition based technologies. Powder get deposited in the form of you have some kind of a binder which keep the powder together to form a structure. So जो pink purple color pink color में जो दिखा रहा है, box is shown in pink color. These are called stimulus trigger technologies. You use some kind of a stimulus, the one that is shown in the diamond mark there. Let me use the pointer from here. Pointer, ठीक है, मिल गए. ठीक है, जो सिंबल इधर दिखा रहा है, it could be either laser, हमको दिखाना चाहिए इसलिए. Okay, there is some kind of stimulus, some kind of active energy which is required to keep the material together. It could be in the form of a in the form of a electrical actuator or laser beam. Everywhere you use the laser beam in order to keep the particles bond together. So 3D printing technology, a little bit of history. It started in the first FDM stands for Fused Deposition Modeling, is one of the printers that was shown in the previous slide. Fused Deposition Modeling patent has been filed in 1992, and after a long gap until 2009, the FDM patent was active, and patent expire होने के बाद the first 3D printed tablet was launched in 2015 year, which is called levacetam or spritam. Okay, then based on successful launch of tablet product, then additional technologies have evolved, and currently a lot of preclinical trials are going on with
bilayer tablets, and also certain alternative 3D printing technologies. For 3D printing technology, this is not just one technology. There are many different technologies which comes under the category of 3D printing. So few like we shown 9 different boxes, right? They're all different technologies. One of the technologies is called FDM. FDM technology is the one that is used in the currently approved FDA product, Spritam. So in addition to FDM technology, 3D printing technology. Okay, we got it back. Thank you. So let me go to the next slide. There are different type of structures which can be made as shown in the picture. Oral dosage form like tablet, vaginal suppository, anti-acne nose patch, microneedle finger splint, and these are the pharmaceutical dosage forms which can be made using 3D printing. Tablet dosage form, one product which is already available in the market already. And the other dosage forms like implants, you can also call them medical devices. Under category of medical devices, you got drug-eluting implants, meaning that the one that is shown in the cage is like a cage, right? This is used in as a stent in case of blockade, cardiac artery, coronary artery blockade, or some other areas where there is a blockage in the artery. So these kind of structures are introduced. These are generally made up of stainless steel. You can deposit drugs onto the surface, and that way you can use anti-inflammatory agents and anti-infective agents. The main problem of introducing stents is that chance of infection or inflammation, which can be addressed by depositing or coating the drugs onto the surface. So this cage is printed by means of 3D printing, and then you can deposit the drugs by means of spray coating. So you can also make drug-eluting cages for bone repair, and drug-laden scaffolds for osteogenesis, and certain surgical meshes can be 3D printed as well. And these are the examples of medical devices which have been commercialized, which are approved recently and commercialized. We got a laser spine truss system, and a vertebral body replacement system, titanium cervical cage, and a bridge fixation system, limb salvage system, and teeth aligners. These are all the products, as you can see from the list here. Recently, they are not very old. Start say 2021 year, 2017, starting from 2016 onwards, last 6 years, several products, medical devices have been introduced into the market in addition to the tablet dosage form that I mentioned. So why 3D printing? 3D printing क्यों करना है? What is the benefit of 3D printing? 3D printing provides a customized, personalized dosage form, जिसको टैबलेट swallow करने का, निगलाने का मुश्किल होता है पेशेंट्स को, बच्चों को, small children, or geriatric patients who cannot swallow tablets, for example. 3D printed dosage forms are very loose and fluffy. You can induce the porosity in the tablet. You can make a honeycomb kind of structure so that it can disintegrate within the mouth. You can swallow without the water. इसीलिए 3D printing बहुत convenient होता है
which provides improved adherence and for in terms of the medication intake or improved drug effectiveness. So वो 3D printing structures जो है implant can be made using 3D printing, which can be implanted any the desired target site of the body. People with arthritis, even Dr. Tiwari and we are talking about making some kind of 3D printed structures for delivering to the tumor site for the local delivery. So targeted delivery to improve the drug effectiveness can be achieved as well. And it will enable combination products. I'm going to show a picture in the next slide. You can introduce any number of drugs without drug interactions. वो conventional manufacturing में tablet manufacturing में क्या होता है सब drug मिला देता है ना or you print them layer by layer, which is complicated. No, because you have to stack one layer of drug or another layer, bilayer tablet करता है, tri-layer tablet करता है. 3D printing में you can make compartmentalized tablet. Each compartment can have a different drug without having any kind of interactions. That means you can make you can go with a large number of drugs, 4 or 5 drugs together. Chronic disease patient में क्या होता है, elderly patient, somebody has hypertension, same person can have diabetes, same person can have propensity to cause a stroke, candidate for the stroke, and there are multiple diseases patients often suffer especially at the elderly age. उसको बहुत tablet एक ही बार लेना पड़ता है. So you can 3D print all the tablets in one unit and you take the one unit, which is very convenient and interesting technology. And appropriate doses for children and patients with kidney disease. So जो patients को kidney disease होता है, metabolism filtration कम होता है, drug accumulate हो जाता है body में. You have to prepare the lower dose. So lower dose करने के children में कैसा how do you give lower dose in children? You use the liquid dosage form and you measure the dose. Dose inaccuracy हो सकता है. या tablet है break करना है ना, you have to break and give the tablet. The dose inaccuracy हो सकता है. Especially drugs with high potency and a narrow therapeutic window, people can die due to inaccurate dose. So you can make a precise dose on demand. Whenever you need the tablet, you can print the tablet basically. What you do, you might ask me, how is it possible to immediately print the tablet in the pharmacy? Basically, you fill the drug and excipient in a cartridge. जो color printer में जो multiple cartridges load करता है, उस तरफ का, you can load the cartridge with the drugs, and you can print appropriate drugs, and you can design a structure using a CAD software and print the tablet containing multiple drugs. समझ में आया ना? Very simple, straightforward. And formulation development activity is some activities required, but it's not too much difficult in terms of making the 3D printed tablets compared to the conventional manufacturing. So as you can see from the structure here, there are 3 tablets in one unit. They are called printlets. वो जो tablet को जो बोलता है, because we are printing here, you can also call them as printlets. There are 3 printlets here. All is one structure. When you swallow it, this tablet will break or disintegrate into 3 different structures. You got the captopril formulation here, which releases the drug by means of osmotic pump, and then you also got nifedipine formulation and glipizide formulation. ये सब का एक ही में print कर सकता है, which is very for addressing the cardiovascular problems for the patients. So there is already one product which is available in the market, which is called levaceturam. Brand name is Spiritam for the treatment of epilepsy. There are other drugs which are under clinical trials as shown in the picture. As you can see, the tablet has got some kind of a honeycomb structure for easy solvent penetration and easy disintegration and quicker absorption. So people with migraine headache, वो तुरंत उसका दवा अंदर जाना है, ब्लड में जाना है, headache relieve करना है ना, like that it will be very helpful if you have faster disintegration. There is no time to go to doctor and take the injection, but you take the tablet which will disintegrate faster
and blood में तुरंत drug within minutes you get the drug into the blood circulation. So people with vomiting, for example, तो tablet अंदर गया, वो vomiting से फिर बाहर आ गया, without disintegration. If the tablet is orally disintegration, the tablet will immediately disintegrate and it get absorbed. So which is where you get a quicker onset of action with such kind of structures. So in our lab, we have got a 3D printer machine with three different print heads as shown in the picture. So we make 3D printed structures like film type of dosage forms and implants in our lab. As shown here, one of the 3D printer cartridges that we got, 3D print heads, which where we melt, we combine polymer like a biodegradable polymer like a polylactide, chloroglycolide, polylactic acid, polyglycolic acid. Those are all sustained release polymers. You can combine the sustained release polymer with a drug. You can make a blend and put it into the cartridge, and printer can heat the cartridge up to 250 degrees Celsius so that the drug and the polymer are molten together. The molten mass is extruded as shown in the picture. So likewise, you can also make a gel. Basically, take a gelling polymer like a HPMC, cellulosic polymer. It could be hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl methyl cellulose, methyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, any cellulosic polymer. You take in small concentration in water, it forms a gel in which the drug can be either dissolved and dispersed. Then you can make that 3D printed structure using the using the print platform. Basically, you are creating a structure. So basically, 3D print is meant for printing the solid structures. Whatever the structure it will define, it will print. Likewise, we got electromagnetic droplet printing. Meaning of this is very simple. Market में there are two type of printers, no? एक लेजर प्रिंटर होता है और इंकजेट प्रिंटर होता है ना. इंकजेट प्रिंटर में इंक फिल करता इंक लिक्विड इंक फिल हुआ रहता है ना. सो यू कैन प्रिंट लिक्विड हियर इंस्टेड ऑफ ए जेल और ए पाउडर. इसमें कार्ट्रिज में you can print either powder or you can you can fill powder or you can fill the gel or you can fill the liquid. When you fill the liquid in a cartridge, it's called droplet printing or inkjet printing. In case of 2D printing, you call it as inkjet printing. In case of 3D printing, where here it is called as droplet printing. Basically, you take a highly potent drug and some kind of excipient. There are two print heads. एक print head solid deposit करता है, another print head liquid deposit करता है, so that the solid and liquid they keep the particles bound together to form the structure. So इसमें ज़्यादा introduction नहीं देना चाहता हूँ मैं. Fluorodispersible films are very convenient in terms of easy swallowing. People who do not want to swallow, people who are unable to swallow, people who have difficulty swallowing, children who have not yet learned to swallow, adult patients who have swallowing difficulty, those cases you need to provide orodispersible films or orally disintegrating tablets. You all know, pharmacy students, you must have come across. So in those cases, you can make the 3D printed structures in terms of pain management, neurological disorders, nausea, vomiting. It is becoming a big area with a $6.6 billion market in terms of orodispersible films, where 3D printing can provide a lot of advantages. And as you can see from the picture, जो film strip बनता है, the moment you put it in the mouth, it disintegrates within seconds and get absorbed into the. You can swallow it. There is no need to keep it in the mouth. As there are certain OTC products which are available in the market for the orodispersible films, and there are no products which are 3D printed yet. But in the future, you can expect some of the 3D printed products in the market. So in terms of printing, it's very easy. There are 4 Ds here: decision making, what type of structure you wanted to print. As you can see here, decide what is the goal of the 3D printing.
Then you use the computer-aided design to define the structure. Then slightly do the formulation development to adjust the concentration of the drug and polymer together. Then you can print the structures and prepare the tablets or printlets or films according to the patient need. छोटा सा पेशेंट का छोटा टैबलेट बना सकता है, बड़ा पेशेंट का बड़ा टैबलेट बना सकता है. According to the body weight, you can make the tablet. Conventional tablets are available in fixed strength, right? Tablet is available 100 mg, 200 mg, 300 mg. If you want in between doses, like if you want to make 125 mg or 130 milligram, because it's a potent drug, according to the body weight, you can precisely adjust the dose by using a 3D printing approach. So I just want to give 3 case examples from the work that is going on from our lab. Then I will stop it. And I know we have a lot of time constraint, and I'm going to go pretty quickly 3 examples. In our lab, we made orally disintegrating films by using sildenafil as a model drug. There are 2 graduate students who worked, Manjusha and Ishwar. They worked on orally disintegrating films using different model drugs like sildenafil for erectile dysfunction, which is available as Viagra tablet, and it says 50 mg tablet is available in the market, and you need water to swallow it. So films are very convenient in terms of easy access beside the bed, and the film disintegrates very quickly and releases the drug for swallowing and absorption. And likewise, sumatriptan for migraine headache relief, these students are working. So as you can see here, you can use 2 different 3D printing technologies to make the film. The film has got the porosity here. So porous film can be produced only by 3D printing, not by conventional manufacturing. So print conditions can be optimized and you can create the structures. And in terms of the process of making it, basically you do initial compatibility, printability for the different polymers. You choose the appropriate polymer, as mentioned here. It can be cellulose polymer or pullulane polymer. Then you do some kind of initial printer adjustment, like printing pressure, temperature, infill density, nozzle diameter, etc. Then you print the structures here, and you do the drug content and the tensile strength and disintegration time, etc. Various routine parameters can be ascertained for the printed films. As you can see here, there is a different infills, meaning that different porosities, which can be introduced for quicker disintegration time. And time ठीक है. Am I good with time? I'm going to go another 5 to 10 minutes. Okay. As you can see, placebo orally disintegrating films. So you got different infill densities to indicate the porosity. You get a monolayer film, bilayer film, and multilayer film. And we added sildenafil as a model drug here. As you can see, sildenafil is uniformly distributed, whether it is a single layer or multi-layer. The film weight is 150 mg, which contain drug up to 50 mg. So commercial tablet has got 50 mg dose, and here you can also make film with 50 mg dose, similar to the commercial tablet, for easy disintegration. Then you see the disintegration is much rapid compared to the in par with commercially manufactured films. So the disintegration time is only 10 seconds in case of less infill density. So even if you make a solid film with no infill or 100% infill, as you can see, the films disintegrate within 1 minute. So another case study, we utilized sintered, thermal laser sintering device. It's kind of a mission which can make the metal 3D printed implants, Metal implants are printed here, which contain stainless steel structures, and stainless steel implants are made and deposited with the drugs onto the surface here. And these are the students worked and generated data from our lab. So why metal implants are 3D printed? Because metals are very heavy, right? Conventional
implants which are used for bone structures, right? You use some kind of, in case of bone fractures, you use the rods as a support, and they contain a lot of weight. In terms of weight reduction, you can still make the porous stainless steel implant or device, and you can deposit the drugs because you can achieve lightweight but still strong, and you can also, which also would enable depositing the drugs onto the surface. By using a airbrush or spray brush, you can deposit the drugs onto the 3D printed implant surface, which would enable delivering drugs like anti-inflammatory drugs and antibiotics. So we have used meloxicam as a model anti-inflammatory drug. As you can see, we have measured the film thickness or deposit thickness onto the surface. I'm going to skip it. So you are able to achieve about 45 days of release from the 3D printed implant, metal implant structure. As you can adjust the drug loading starting from 10% to 20% drug loading. You are able to get drug release up to 45 days with different drug release rates. Drug release also can be modulated by adjusting the coating thickness. So as you can see, less is the coating thickness, faster will be the release. But in the release here, in all coating thicknesses, we are able to extend the release for up to 30 days. So once the implant is surgically installed in the patient affected site, the drugs will be released for up to 1 month until the wound is surgical wound is healed. That's why the prolonged release is desirable in case of surgical structures. So we did we did some kind of compatibility studies. Once we made the 3D printed structures, we need to study whether the structure is going to be compatible into the body or not. We used some osteoblastoma cell lines. These are the bone cell lines. So we did cell adhesion studies, cell proliferation studies, biofilm formation studies. In all cases, we found that 3D printed implants showed better adhesion, better proliferation, and lesser biofilm formation, which shows that 3D printing is beneficial. A 3D printed coated implant is beneficial compared to the uncoated implant. So the third case study, quickly, is capsaicin. We have loaded capsaicin. Capsaicin, as we all know, chili peppers में capsaicin होता है ना, which is anti-obesity weight loss drug. Capsaicin can be, it has been well reported in the literature. Capsaicin helps in weight loss. It burns the brown fat and white fat in the body. Adipose tissues, the capsaicin helps in metabolizing fat. So the problem with capsaicin is it is not absorbed orally. Only 1% get absorbed orally. Remaining gets eliminated. So you can deposit or you can deliver capsaicin to the belly fat region, so that the drug capsaicin will be released at the local region for a long period of time. So we have built some kind of structures as shown in the picture here. By using the thermoplastic cartridge or print head, we made polymeric capsaicin implants by using the 3D printer. So in this, basically, you are making a needle-shaped implant. This needle-shaped implants, you can put it in the, you can inject under the skin using a hypodermic needle. There is no surgery required. So self-administration, or there is no need of, it's not self-medication, but simple injection can help. You can take one injection every 3 months to 6 months. It will keep delivering capsaicin to help in weight loss. So we have filed a provisional patent for this technology, which is developed in our lab. So we have done some kind of initial testing to show that we have the stability indicating HPLC assay to perform the stability studies to prove that capsaicin is not degraded due to high temperatures of melting. And we also perform DSC studies to show that melting endoderm is still there, and there is no degradation happened due to heat or due to storage.
And I will skip this one. And as you can see from the release study, we have done the release study for a period of up to 6 months. The capsaicin is still there in the implants. Only 75% is released, and the drug is still being, study is ongoing. We can continuously release capsaicin from the implant for up to 6 months. So therefore, we can inject one implant under the skin. We used biodegradable polymer like polylactide chlorglycolide, or we also used polycaprolactone, which are medical grade polymers approved by FDA, so that there is no toxicity issues or there is no other concerns in terms of the implant effects in the body. So then we might ask, why can't we print, why can't we make this structures, needle-shaped structures conventionally by regular manufacturing? Why should we 3D print them? The benefit of 3D printing is that इधर देख लीजिए, we can induce the porosity in the structure, which is not possible by conventional manufacturing. We can make porous structures. Why porosity? Porosity is the one that helps in modulating or regulating the drug release. More is the surface area, more is the drug release, less is the surface area, less is the drug release. So that way you can modulate the drug release. So we have done the short-term 3-month stability study. We found that the implants are highly stable for up to 3 months, as shown by the assay, HPLC assay. And these are my graduate students, Manjusha, Ishwar, Noor, and Chuzang. These are the people working in 3D printing and generated the data presented here. And I also want to acknowledge the help from graduate students, previous graduate students, and the postdocs who work in the lab. My collaborators, Dr. Tiwari is here in this conference, and I work with several other people inside the campus and outside the country also, international. I just want to give you, I'm done with this presentation, but I just want to tell where I am from. I'm from Auburn University, which is established in 1856, 160-year-old university. We got a huge campus, 2,000 acres campus. We got 140 graduate programs. We are top 50 public universities in the country, and in the past 25 consecutive years, we are maintaining the 50th, below 50th rank. We got 30,000 students in the campus, and we are 100 miles away from major city, Atlanta. And Harrison School of Pharmacy ranked 25 among the pharmacy schools. We got 145 schools in the United States, and we got 600 plus graduate professional and PharmD and graduate students. We got and we got a state-of-the-art new building built 5 years ago, 37,000 square foot research facility. There are 14 faculty members who got the research labs there, and we got all kinds of facilities in terms of Yes. Hello, sir. Myself, Dr. Nandanlal Singh. I want to know that, sir, for kidney failure patient, our first attempt to reduce the concentration of creatine in the blood. So, is there any expected mechanism that 3D medicines can reduce the concentration of creatinine? we can adjust the drug loading, and we can also modulate the drug release from the implant. We're talking about different things here. One is immediate release drugs, another is control release drugs. But I think we are here focusing on release, right?
वो तो डोज तो एडजस्ट कर सकता है. I do not, we can, according to the need of the patient, according to the elimination profile of the patient, we can load any concentration of the drug to achieve the target release. वो आंसर किया आपका? नहीं. Sir, but how it reduce the concentration of creatinine in the blood? कैसे हो रही- वो तो फार्माकोलॉजी है. वो तो That's why I'm asking that is there any expected mechanism of 3D to reduce the concentration? कोई ऐसा expected है कि इसका कि ये भविष्य में जाके उसको reduce कर सकती है फ्यूचर में? हमारा जो वो बना है वो all solid structures that we make, including the drugs, and it depends on the drug का depend होता है the drug. It depends on the property to do with the 3D print. Thank you, sir. I hope that all of you have enjoyed the lecture. In a brief time, sir has given the very good knowledge and informative. Sir is still available here. If you are having some queries, you are free to contact to sir. So thank you, sir, for your nice informative lecture. Thank you very much, sir. Now, I request to Professor Lalwani to felicitate our eminent speaker, Professor Jar Ram Babupuram, sir. So please, sir, please come on stage for to take achievement certificate and memento. First 20 students board with you. Now I request to Dr. Girish Singh Chansoni, sir, to please felicitate our Professor Lalwani, sir. Please stay on stage, please, to felicitate Professor Lalwani as a memento, gift as a memento and certificate. Thank you very much, sir. The next lecture to be delivered by Professor C. Karthikeyan, sir, and the session will be chaired by Professor Sailendra Kumar Sarab, sir. So I request Professor Sailendra Sarab, sir, to please come on stage. Sir, please come on stage. Good morning, everyone. This would be the third scientific lecture in the session, and the speaker would be Dr. C. Karthikeyan. He is an assistant professor at Department of Pharmacy, Indira Gandhi National Tribal University at Amarkantak. Born on October 27, 1977 in Tamil Nadu, Karthikeyan completed his B.Pharm in 2000 from the MGR Medical University, Chennai, which was followed by post-graduation in medicinal and pharmaceutical chemistry in 2003 from SGS ITS. He worked as a project fellow in the same institute on the UGC research project and was awarded CSIR SRF in 2006. Completed his PhD from RGPV Bhopal, a visiting scientist at University of Toledo. He has taken up the current assignment as assistant professor at Department of Pharmacy, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak. His area of research is small molecule drug discovery for cancer and neurodegenerative diseases, in which he has more than 80 high impact publications. Quite creditable. His research in the area is funded by national research funding agencies like UGC, New Delhi, and DST. He has filed 4 patents, one of which was recently awarded a US patent for the discovery of small molecule inducers
of non-apoptotic cancer cell death. He is also currently serving as a member in editorial board of 3 international journals and is an academic editor. The list goes long, so I'll cut it short and invite C. Karthikeyan ji to begin with his talk, please. With the kind permission of the chair, I would like to request the participant who are having the poster session as well as the presentation session today, requesting to the main presenter and main author of the poster, up to 25 students, they can leave the hall and parallelly they can join their poster as well as their presentation session. Okay, only main presentation author. Okay, we are having the list. Only main author can leave the hall, please. Thank you. This will be changed here and there. Good afternoon, all. Thank you. My humble gratitude to the Vice Chancellor, sir, for giving me this opportunity. Dr. Karthikeyan, just a second. Please settle down. And I would also like to thank the organizers for giving me this wonderful opportunity to visit Jhansi and share my research work with the students. Now, the topic of my talk is targeting neural kinome as a therapeutic approach for neurodegenerative studies. So I will be describing my research on small molecular drug discovery against kinases implicated in neural diseases or neurodegenerative diseases. And then I will give an example case study to showcase the approach I use to discover new molecules. Now this will be a little bit challenging for me because both the sessions which happened previously were bilingual, and we have also time constraints, so I will try to rush it up some slides, okay, and then complete the session within the stipulated time. Okay. Now, as we are talking about kinases, we cannot ignore protein phosphorylation. Why protein phosphorylation? Because protein phosphorylation is the mechanism by which multiple cellular pathways are regulated. Okay, so this protein phosphorylation mechanism uses two enzymes. One is kinases, the other one is phosphatases. Okay, and almost 30% of all the proteins in your body are phosphoproteins, which means that one way or other they are regulated by kinases. Now, what are kinases? Kinases are those enzymes which catalyzes a transfer of a phosphate group from ATP to one of the proteins which would normally have a serine, threonine, or tyrosine. Okay, so once phosphorylated, this phosphorylation will induce some conformational changes in the substrate proteins. For example, if there is a kinase, if it phosphorylates one substrate protein, it will cause conformational changes by which it can either activate a
protein or deactivate a protein, or even it can allow the protein to bind with multiple proteins, multiple other proteins, protein-protein interactions. Okay. Now, human genome encodes more than 500 kinases, and out of that, 150 kinases are present in the nervous system, or they play an important role in the nervous system. Now, most of these kinases are understudied kinases, which means that they sometimes you call it as a dark kinome, which means that not much has been done. Okay. Now, what do you mean by kinome? Kinome represents all the genes which encodes for kinases. So neural kinome means all those genes which encode for protein kinases present in the nervous system. Okay. Now, what is the role of this neural kinome? They do play a normal role. For example, they maintain the neuronal homeostasis, which means that they maintain the neural circuits, synaptic plasticity, neurotransmitter release, and also some expression. But in most of the pathologies which involves neurodegeneration, they play a negative role, which means that they play an important role in the pathophysiology of the disease. For example, examples are Alzheimer's disease, Parkinson disease, epilepsy, schizophrenia, ALS, autism spectrum disorders, and so many. Now, if you look at the structure of a protein kinase, you can simplify it into two lobes. One is the amino terminal lobe, N-terminal lobe, and the second one is carboxy terminal lobe. And both these lobes are attached through a hinge residue, like this. Okay, and the hinge residue is important because that is where your ATP binds. And this hinge residue will be overlapping the catalytic site, which means that the ATP has to bind in the ATP binding site, and then it has to transfer the gamma phosphate to its substrate protein. Okay, now this is the conformation of the ATP. You can see the adenine, which is forming two hydrogen bonds with the hinge residues, and you can also see the transfer of the gamma phosphate here to the substrate protein. Now, why kinases? Because they are considered to be the most druggable. Now, if you look at the last 2 decades, more than 52 kinase inhibitors has received FDA approval. So that's why it is a tractable target for drug discovery. Now, why did we start this work? Because we got an opportunity to work with a neuroscientist or neurobiologist, Dr. Laurent Meyer. He is from France. In 2012, he called all the medicinal chemists to design and develop kinase inhibitors which are implicated in the neural kinome. So this was an open call. He had the platform to screen all the small molecules against these kinases, and we are only supposed to design and submit those molecules to him. Okay, and that's why we started working on these kinases. What are those kinases? GSK3 beta, CDK5, CLK1, casein kinase 1, DORK1, and also BCR-ABL. Okay, now what did we do? Our strength is medicinal chemistry. So what we do is we use structure-based drug design protocols, ligand-based drug design protocols to develop small molecules, to find our lead molecules. And once we get a lead, we optimize it, and then we take it to the preclinical stage. Now, most of these kinases are involved in Alzheimer's disease. And you know, I need not explain much about Alzheimer's disease. It is a common form of dementia, which is a progressive cognitive deficit and memory disorder. Now, these are the two hallmarks of Alzheimer's disease. One is the beta amyloid plaques and neurofibrillary tangles. And beta amyloid plaques consist of a beta amyloid protein, which is a 42 amino acid protein. They all combine, aggregate together to form an extracellular plaque, which cause neurotoxicity, neuroinflammation, and also interfere with the neurotransmission. In the case of neurofibrillary tangles, it involves a mitochondrial protein stabilizer protein called tau, which gets hyperphosphorylated, and it combines together with other proteins inside the neuronal cell and form a tangle. Now, these two are the hallmarks. Now, what we are going to do is we are going to target those kinases which are involved in both these hallmarks. So these are the beta amyloid protein and tau. Now, by targeting these kinases,
we are going to target amyloid hypothesis and also tau hypothesis. Now, how do we do that? Now, if you look at the expression profile of kinase in beta amyloid hypothesis, you have these three members, GSK3 beta, cycle independent kinase 5, and DYRK1A. On the other hand, tau is a substrate of all these 5 proteins, GSK3 beta, CDK5, CLK1, casein kinase 1, DYRK1A. So what we can do is by targeting these kinases, you can get therapeutic benefit by interfering with the beta amyloid formation of beta amyloid plaques and also neurofibrillary tangles. Now, what we do first is, like, we took it as a postgraduate project to the students. So for a postgraduate project which involves only a year, we want to go on the safer side. So what we did is we tried Me Too policy. What is Me Too policy? Have a drug which is already reported by an innovator company and try to come up with better modification. Okay. And in that process, we serendipitously discovered, by accident, we discovered a new dual CLK1 and DYRK1A inhibitor. Now, this is serendipity. Most of the drugs comes through serendipity. Okay. There are several accidental discoveries in the pharma. Now, what we took up this molecule, which was reported by a MNC called Vertex Pharmaceutical, which is a aryl hydrazino-pyrazolone. Okay, and we wanted to, now if you look at a paper published by a company, now you have to look at the structure carefully, because if a company, pharmaceutical company, publish a paper in a journal, it is just like a dump yard. Dump yard means that molecule, one way or other, has not worked in the preclinical studies. Now you look at the structure. If you look at, there are two problematic things in this structure. One is the pyrazolone. It is a nightmare because it has very poor aqueous solubility. And another is a hydrazino group, which can lead to, it is a metabolic liability. It can lead to formation of carcinogenic metabolites like aromatic amines. So that's why this company has given up on this molecule, and they have published in a small journal called BMCL. Now, how to improve those? But still, this molecule has its own merits. How? It gives you an information about the pharmacophore, which could be used, or a pharmacophoric template, which could be used to design new molecules. So you see, and all these molecules are having good potency, from 4.5 to 1 nanomolar against GSK3 beta. So what we try to do is we try to overcome the barriers or overcome the shortcomings of this molecule. Now this is the binding domain. As you can see, that this pyrazolone NH and CO is attaching to it, it is forming hydrogen bonds with the hinge residues, which is valine 135A and aspartate 133. Okay. Now this is what we see as a pharmacophore. There are three things which could be modified. These two aryl rings, which basically gets engulfed into hydrophobic sites. Okay, and this basic core template, which is the pyrazolone, which interacts with the hinge residues. Now this is the newly designed analog. What we have done here is we have replaced this hydrazino group with an imine. Okay, so this is much more stable, and we have replaced this pyrazolo group with the triazolothione. Okay, we were more interested in having this thione as a ketone, but because of some issues, because it requires using phosgene, which is a hazardous chemical, not to project students. So that's why we don't want them to exposed to phosgene. So we replaced this with, we went with the thione. Now, this is our hypothesis that this molecule would show a similar binding profile like that of the molecule which is shown by the, or which is reported by the Vertex Pharmaceuticals. Now, this is how we synthesized it: two-step synthesis, condensation and cyclization of a benzoic acid with thiocarbohydrazide, and followed by Schiff's reaction with an aldehyde in glacial acetic acid to give your compound. Simpler synthetic method. And you see, when we send these compounds to Dr. Meyer's lab, he tested it against 5 different kinases, and he found that these molecules, although it shows some
GSK3 beta, 3 alpha beta inhibition, but it showed potent CLK1 and DYRK1A inhibition. Okay, so we got a lead. We got some promising molecule which shows sub-micromolar potency and also shows some kind of selectivity over other kinases. You can see the selectivity fold, okay, in this diagram. Now, we were looking for a GSK3 beta inhibitor, but we found a CLK1 and DYRK1 dual inhibitor. Now, this is a serendipitous finding. This is by accident. Is it good? Yes, it is good. Because there are 2000 molecules. In 2012, there were more than 2000 GSK3 inhibitors reported in literature, but only 12 CLK1 inhibitor and DYRK1 inhibitor, which was reported. So we hit a jackpot by accident. And these two enzymes do play a role in both the formation of beta amyloid plaques and also the formation of neurofibrillary tangles. So it can inhibit or it can modulate both the two hallmarks of Alzheimer disease. Okay. Now, this is the key interaction showed by, for example, if you want to do docking studies, normally what you do is you just look for some reference ligands and look at the interaction shown by the reference ligands and try to compare whether your molecule shows the same set of interactions with in the active site of your target enzyme. Okay, and we found that it was showing. We didn't disclose the structure. Now, what we did is we optimized both the aryl groups and then we come up with a potent inhibitor. You can see it is a very potent inhibitor. It shows around almost 58 nanomolar potency against CLK1. When we discovered it, the most potent inhibitor which was reported was around 100 nanomolar. We got a more potent compound than the reported molecule, and also it shows 210 nanomolar potency against DYRK1A and excellent selectivity. You can see other kinases. He screened it against 9 different kinases, and he found this to be a very potent inhibitor of CLK1A. Okay. Now that was one of the case study which we tried in our lab. Now there are several other molecules we have come up with, different scaffolds. We have synthesized and tested more than 400 compounds, and we have come up with some exciting leads which shows a diverse activity profile. Some are selective inhibitors, some are multi-kinase inhibitors. So we landed up with a library of kinase inhibitors. Okay. Now these are some of our papers. We also discovered some selective inhibitors based upon anilinoquinazole scaffold. And this is how we get the results from Dr. Meyer's lab. You see how much you can see the amount of data he provides on the screen, and you can see most of the compounds were potent. So you can see some are multi-kinase inhibitors, some are selective inhibitors. Okay, and depending upon the kinase inhibition shown by the compounds, then you can repurpose it. You can look for different therapeutic applications of these ligands. This is our second paper in which we designed selective casein kinase delta and epsilon inhibitor. Okay, it was showing almost around 2 micromolar potency against CK1 delta, and we published this paper in BMCL. It was a cover page article. Now, we have continued to work with different scaffolds. Now, we have also tried a triazole 3-thiol scaffolds, and we came up with a dual CLK1A and DYRK1A inhibitor. And also we continued our medicinal chemistry with 6,7-dimethylquinoxylane, and we came up with another set of dual kinase inhibitors. Now, what can we do with this? We have a plethora of inhibitors. We means that we have multiple kinase inhibitors, which are some are selective, some are non-selective, some are multi-kinase. Now, which means that you can explore polypharmacology. Now, what do you mean by polypharmacology? If you are able to inhibit multiple kinases or multiple targets involved in a pathology of a disease, then it may show enhanced or synergistic effects. Now, this is normally tried through knockout experiments. You knock a gene out and then you look for effects. Now, when you have a small molecule inhibitor, you can use it as a tool to explore what happens if we inhibit 2 such proteins which is involved in a certain pathway. Okay, so that can be done. And other than that, these kinases have multiple therapeutic are involved in multiple disorders.
Not only, even it has some of, for example, casein kinase 1 delta and 1 epsilon, it is involved in triple negative breast cancer. DYRK1A, it is involved in neural regeneration. So there are multiple therapeutic options or opportunities with these inhibitors. And finally, what we need to do, we have already done some preclinical studies. We found it to be very potent, inhibiting neuroinflammation also, especially the last one. It is unpublished data, so I have not put it in the thing. And finally, we are looking to file almost 5 or 6 different patents out of it. This is the future prospects of our finding. Now, all these molecules were synthesized by our PG students. Okay, and it was under the mentorship of my guide, Professor Piyush Trivedi. Now, Mr. Lokesh Chaure, Aravind Kumar Jain, Digambar, Kalicharan, Princey, Sanjeev Patel, Sunil Kumar, Sandeep Jain, Nelia, Pratna, Rekha, everybody synthesized almost 20 to 50 compounds, and we tested everything, and we now have a small library of compounds with kinase inhibitory potency. And thanks to my collaborator, Lauren Meyer, who was previously with CNRS Spans. Now he has started 2 spin-off startups, and right now he is not doing any kind of kinase inhibition assays for free. But right now he is working to develop whatever inhibitors that has been developed and commercialize whatever inhibitors that has been discovered in this collaboration. And finally, my thanks, my humble gratitude to Professor Amit K. Tiwari, because he used to do the toxicity assays of our inhibitors, because our kinase inhibitors are not supposed to be toxic. Okay, so with this, let me thank again for your patient listening. Now I'll be happy to answer any questions if you have. Thank you, Dr. Karthikeyan, for the very informative talk. In fact, neurodegenerative disorders, they need a lot of research, and it's very nice to see you working on them. I hope the young crowd out here would be interested in that, because see, after cardiac disorders, neurodegenerative disorders happen to be the most prevalent nowadays. I'll permit 2 questions because you've got time constraint. Sir, 2 questions, please. Yeah. sir, myself Dr. Nandlal Singh. Sir, in Parkinson disease, sir, patient required L-DOPA along with carbidopa, because DOPA decarboxylase enzyme present peripherally, it converts the L-DOPA into dopamine, and dopamine can cross the blood-brain barrier. तो क्या आप ऐसा कुछ वो कर रहे हैं कि जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो Yeah. So basically, most of the kinases which we are studying are either having an effect on tau protein, which means that it can be used for the therapeutic targeting of any taupathy. So Parkinson disease में DYRK1A inhibitors have a role, but not as per आप जिस mechanism पे बोल रहे हैं वो नहीं होगा, but दूसरे mechanism पे करेगा वो. mechanism, sir, which mechanism? For example, phosphorylation को inhibit करेगा वो tau protein का, उसके कारण जो benefit होगी, therapeutic indication होगी, वो होगी. Sir, thank you. For example, neurotransmitter release को जो inhibit करने वाला mechanism है, उसको रोके. उसको रोकेगा. Okay, thank you, sir. Any other queries? Yeah. Please pass on the mic. So my question is, in Alzheimer disease, I have read in literature that there are various causes: amyloid plaque, oxidative stress, and protein foldings can also cause it. Even diabetic patients can have Alzheimer, and it can be passed genetically too. Yeah, actually there are 3 major hypotheses. One is cholinergic hypothesis. Yes. But those molecules which target those cholinergic hypothesis gives only symptomatic relief. मतलब वो basic disease modifying नहीं है, वो symptoms को relieve करेगा. जैसा neurotransmitter को बढ़ाएगा, है ना? जैसा misfolding बोल रहे थे, वो tau है. Yes, sir. Tau भी क्या होता है? Phosphorylation होके misfold होता है. ओके वो क्या करता है? न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बनाता है ना? दूसरा जो न्यूरो इन्फ्लेमेशन आप बोल रहे हैं
वो किसके कारण हो रहा है? It is because of the toxicity caused by amyloid plaques. अब amyloid plaques को आप inhibit करेंगे, उसके अलावा GSK3 बीटा और उसके अलावा दो बाकी काइनेसिस है, they do also play a role in neuroinflammation. उसको inhibit करेगा, जैसा हमारा in vivo studies ये बता रहा है, it was having much more effect than any plant-based natural product. Antioxidant activity, मतलब antioxidant मतलब it's not through RAS, but it decreases the neuroinflammation. Yes. It gives cognitive benefits. Sir, in literature, White's told that we still don't understand the main site we have to target Yes, in Alzheimer's. that's why I told you it is a hypothesis. आप सोच लीजिए कोलिनर्जिक में तो ड्रग है, Yes, sir. बट आपका जो बीटा अम्लाइड हाइपोथेसिस है और टाउ हाइपोथेसिस है उसमें कोई ड्रग नहीं है, इसलिए उसमें काम करना पड़ेगा एंड यू हैव टू कम अप विद मॉलिक्यूल्स एंड देन प्रूव इट इन द preclinical model and clinical model. Thank you, sir. Very correct. Dr. Karthikeyan is a synthetic medicinal chemist, and the more pharmacology, maybe you can discuss with some pharmacology people. And I think good questions are coming. I'm impressed. That means people who are listening, they haven't slept as yet. Thank you, Dr. Karthikeyan, for the nice talk. Thank you. Thank you very much, sir. Now I request to Professor Sailendra Kumar Saraf, sir, to please to facilitate our esteemed speaker, Professor D.C. Karthikeyan, sir. Thank you, sir. Now I request Dr. Ramji Shornikar, sir, please come on stage and facilitate to our esteemed guest, Professor Sailendra Kumar Saraf, sir, as a chairperson. Thank you very much, sir. The next expert lecture to be delivered by Professor Sailendra Kumar Saraf, sir, and Professor Ranjit Kumar Saraf, sir, will chair the session. Ranjit Singh, okay, sir. So I request to Professor Ranjit Singh, please come on stage. Yes, sir. 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 Thank you very much. Thank you very much. After, pure hardcore scientific lecture, this is a lecture which is a kind of different talk, and the speaker is Professor Shailendra K. Saraf, and I am honored to introduce him to the audience, and it is also a matter of honor for me to chair the session. Professor Saraf did his bachelor's, master's, and doctoral degree from Department of Pharmaceutical Sciences, Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya Sagar, and Hemati Nandan Bahuguna Garhwal Central University, Srinagar. He further did his bachelor's degree in law from Lucknow University. He is a professor of pharmaceutical chemistry and presently working as Director of Pharmacy, Babu Narsi Das, Northern India Institute of Technology, Lucknow. He is ex-Dean Pharmacy and Convener Board of Studies in Pharmacy of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. He has more than 31 years of industrial teaching and research experience. He has been affiliation coordinator in MOU with Eli Lilly and Company for the Open Innovation Drug Discovery OIDD program. He is a research advisor of Nanyang Academy of Sciences, Singapore. He has completed the leadership for academician program, that is LEAP 2019, conducted by Tata Institute of Social Sciences, TIS, Mumbai, and University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, sponsored by Ministry of Human Resources and Development, Government of India. He possesses CMI Level 5 certification in management and leadership from Chartered Management Institute, United Kingdom, through AICTE and UK, India,
Education and Research Initiative 2020. He has guided 125 M.Pharm dissertations and many research scholars for PhD. He is a person of principle and a, authority in the field of organic chemistry. It is my pleasure and honor to invite him to deliver a talk on very interesting topic. Professor Saab, please. Thank you, sir. क्या हो गया? Thank you, Dr. Ranjit Singh, for the introduction. And good afternoon, audience, once again. Now they have put me on stage and they want me to stay on the stage. And can I request everybody who is sitting on the back seats to come forward, please? पीछे बैठे लोग कृपया आगे आ जाएं. This is my way of waking you up. The sooner you do it, the better, so that we can start. चल रहा. एक माइक रंजन कर दो. चलिए, have we settled down? Thank you. Thanks a lot for settling down. चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है. This much is okay. People have got up now. Please settle down fast. So we have been having a lot of deliberations since morning, lots of science. Let me remind you, today is National Science Day, in case you have forgotten. And on this National Science Day, I have been given the task of giving a nonsense talk. Did I say nonsense? No, it should be non-science talk. So let me begin with my non-science talk. And as you can see, I'll be talking about some ethics in research and plagiarism. In fact, I'm a man from pharmaceutical chemistry. They didn't want me to talk science. Nobody wants to listen to pharmaceutical chemistry, although Dr. Karthikeyan was good enough to get his message through. Otherwise, chemistry ab koi padhta nahi. And it is sad. So this talk, in fact, I've given at 2-3 places. People said, okay, so now we have become more like, instead of a pharmaceutical chemist, I'm more like a Babaji giving pravachans. Anyways, so all research has been talked. My young researchers who are here,
I just want to tell you a few things, maybe if you remember, and let me begin with a story. This is a South Korean scientist who came into fame in the early 20s, or rather early 20th century. His name was Hwang Woo-suk. He did a lot of research on stem cells, his good papers and everything. Finally, what happened was that the entire research was found to be fraudulent. And for that, he had to apologize, he had to withdraw his papers, and even given a 2-year suspended sentence. Right? So basically, what I want to say is that research is a creative process, and it includes far more than mere logic. It includes insight, genius, groping, pondering, sense. The logic we can teach, the art we cannot. Research basically requires imagination, initiative, intuitions, and curiosity. I have tried to get my message through to you with the help of few cartoons also. So what I want to say is, do not go for frivolous research, the first thing that I want to say. And as the cartoon depicts, you can read it. If I have to read the cartoons, then it will be pathetic. So you kindly concentrate on the cartoons also, they will give you some message. We spent $10 million for a pill that melts in your mouth and not in your hands. That's what. So kindly don't go for frivolous research. Kuch bhi de diya, kuch bhi kar diya, that kind of a thing. Please don't do it. How should you build your research problem properly? A well-defined and structured research problem is the heart of the research project. First, the researcher should have a practical problem and a contradiction in literature. Both the things, they will help you in designing your research problem. Practical problem is more or less equal to the research puzzle. It's like a puzzle. Contradiction in literature is a phenomena which needs a scholarly inquiry. That means this is one area where you can do your research if there is a contradiction. How should you build your research problem properly? A well-defined and a structured research problem is the heart of the research project, as I already said. So we can have a practical problem of this sort. See, I'm from chemistry, so I tried to put some chemistry also in this. I'm sorry, G, we are basically not a good match. The basically out here means base and alkali. And for any research, you have to be novel. So novelty, how to become novel, you have to find out the prior art, traditional knowledge, known uses, and known dosage form. These are the areas जिनके बारे में यदि आपको पता है, तो you can design your research problems. You are given scholarships for getting a good degree and honest research. Not like if you research may be solidified, but if it is not honest, your funding is definitely going to vaporize. These are the two words on which the entire thing rests, which are morals and ethics. Morals are basically rules that define what is right and what is wrong. And ethics is process of examining moral standards and looking at how we should interpret and apply such standards in real world situations. Do we understand these words? Do these words have any meaning? रिसर्च में मैं हिंदी भी थोड़ा सा यूज कर लूंगा, ज्यादा अंग्रेजी हो रही है, ऑलरेडी वी हैव हैड इनफ ऑफ अंग्रेजी, ठीक है? तो रिसर्च में इथिकल इश्यूज कहाँ आ सकते हैं? इट कुड बी द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट इज बीइंग रिसर्च्ड, देन यू कैन हैव नेगोशिएटिंग एक्सेस, मेथड्स फॉर डेटा कलेक्शन, context of research, the sample, the data collected, and uses of the data. In fact, if you can understand, हर stage पे ethics की problem आ सकती है. Research ethics includes all these factors, as you can see, right from honesty and integrity up to objectivity. I'll be talking only about this and this. So let me say a few more things about research ethics. Research ethics specifies responsibility of institutions and responsibility of researchers. Both the things, they go together. Researcher naturally would be a part of an institution.
तो दोनों साथ जाएंगे, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्पेसिफाई करना रिसर्च इथिक्स में जरूरी है. The points to be considered are management of research data and primary material, supervision of research trainees, publication and dissemination of research findings, authorship, peer review, conflicts of interest, and collaborative research across institutions. जैसे ये लोग कर रहे हैं, कई लोग मिलके they are doing research. So all that has to come into the research publication or dissemination or whatsoever. नहीं तो होता क्या क्या है, that I'll tell you further. Now, why do we need this ethics in research? It is for protection of rights and welfare of research participants and to protect the wider society or community within which the research is actually being conducted. These are a few things which I'd like you to read instead of me reading them. Definitely, no research should be harmful. Confidentiality should be maintained, and deceptive things should not be the part of any research. Some ethical principles, just go through them. Pravachan to hai, but I'm trying to make it a bit interesting if you can. And just think a moment, how might these principles be affecting research? So now what is being done is to monitor research ethics, institutional ethics committee is becoming essential. जैसे हम लोगों की IAEC होती है, institutional animal ethics committee, that is for animals. This is for, as I said, human subjects. Giving false claim about your qualification and affiliation is just one example, and it is unethical. So you can read the cartoon. I don't need to go into it. And if you feel like, you can smile also. Nobody is stopping you from that. On the internet, nobody knows you're a dog. And that is what is actually happening. Instead of going through literature, going through books, people are reading from the internet. Some things are good, but not everything is good. And naturally, आजकल बहुत कुछ हो रहा है. I don't want to talk about it. So these are the keywords of academic integrity. काफी सारे सुने होंगे, कुछ पढ़ लीजिए, एक दो भी याद रह जाएं. My aim is done. So why do good people seem to do unethical acts? कभी-कभी अच्छे लोग भी अजीब काम कर देते हैं, समझ नहीं आता क्यों कर रहे हैं. There are various reasons. First is multiple roles. In different roles, we sometimes hold ourselves to different standards. ठीक है, हम दुकान में जा रहे हैं, बिग बाजार में जाएंगे, चोरी नहीं करेंगे. मगर यदि ऑफिस में कुछ स्टेशनरी रखी है, तो उसमें से पेन भी उठा ले जाएंगे, कागज भी उठा ले जाएंगे. So that is what I want to say. Then comes courage. Sometimes it is hard to do what you know is right. This is actually very important. सही काम करने में मुश्किलात ज्यादा आते हैं. Then consensus. Sometimes we question our choices. कि यार मैंने जो चुना वो सब सही है, ये बाकी लोग तो कुछ और कर रहे हैं. Right? And then finally error. जिसका बहाना हम हमेशा लेते हैं, that we all can make mistakes. So the devil and the angel. The angel says don't do it. It's plagiarism, it's stealing. But the devil says, sorry. The devil says, go ahead, nobody will know. हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम इसकी बात ज्यादा सुनते हैं. And these are a few lines from Grisham's Rainmaker. यदि कभी नाम सुना हो तो. Every professional, at least once in every case, feels himself crossing a line he doesn't really mean to cross. It just happens. हो जाता है. The cartoon says we are forced to be more ethical since we can't afford best lawyers. And the message is being unethical and legal can cost a lot of money as well. फंस गए तो वकील साहब के चक्कर ही लगाते रहोगे और पैसे देते रहो. Right? Therefore, the value is in knowing where the line is drawn before you cross it.
पहले जान लीजिए, वो बेहतर है। When in doubt, apply ethical test. ये कुछ ऐसे ही बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो लीगल है, वो इथिकल है और इलीगल है, या लीगल है और अनइथिकल है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ट्राइड टू डिवाइस इट into this form. The first is ethical and legal, second is ethical and illegal, third is unethical and legal, and the fourth is unethical and illegal. One and four are easy decisions. Why? Because ethical and legal कोई problem नहीं है, unethical and illegal हम चोरी कर ही रहे हैं, बचे ये दो. So if you can balance between all these, और इसको यदि आप कोरिलेट करना चाहें, जो पीजी के बच्चे हैं या यूजी के बच्चे हैं, यू कैन इजीली कोरिलेट इट विद बीसीएस क्लासिफिकेशन. याद आ रहा है? सो बीसीएस क्लासिफिकेशन से आप इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं. दिस इज लाइट ऑफ द डे टेस्ट. What would be your reaction if the action were brought out into the public for public scrutiny? यदि पब्लिक में कोई चीज डाल दी जाए, आपका डिसीजन कैसा दिखेगा, ये खुद सोच लीजिए. यदि आपको लगता कि हाँ ठीक होगा, दैट मीन्स यू टेकिंग द करेक्ट डिसीजन. एंड फाइनली द गोल्डन रूल, डू अनटू अदर्स टेस्ट. जो काम आपके साथ हो और आपको अच्छा लगे वही करिए. दैट मीन्स इफ यू वुड लाइक अदर्स टू डू द सेम टू यू, देन द एक्शन पासेस द टेस्ट. कृपया अपनी रिसर्च को हुक और क्रुक से जस्टिफाई ना करें. जैसे कि perhaps the reason the test drug this kills mice but not people is because mice are different from people. कितनी महान बात है. ऐसे बहुत से लोग करते हैं. And you see what the guy is thinking. He is saying and he'll probably win a Nobel Prize for that theory. हंसी सकते हैं लोग आपके ऊपर if you go for a frivolous research. And then one more. Do not fake your experiments, please. See the cartoon? It says we have run out of lab rats. Henderson, put this on and come with us. Right? So ethics is basically about quality and research integrity, doing the best possible research. It is about how we conduct our research from start to finish. And ethics is about how we treat those involved in or affected by our research. So all this is ethical considerations that you have to take care of when you are into research. You should have the courage. If you become aware of misleading or inaccurate statements after your work at a later stage, you must correct it. गलती हो गई, कोई बात नहीं. You can always correct it. You can give an addendum, you can give a corrigendum, whatsoever, right? And then be ethical in every issue. हर चीज में ethical रहने की कोशिश की जाए. The cartoon says our scientists say it would be a public health hazard, but market research shows it would sell like hotcakes. What do you say? So we are not going to go into such a research. It is an ethical disaster. So then another thing comes to your mind. What should we do? Should we be legal or should we be ethical? Well, हमारे काफी सारे researchers को सब पता है. They thrive on unethical, though not always illegal methods. हिंदुस्तान की खासियत है, हम लोग ऐसे तरीके निकाल लेते हैं कि वो illegal ना हो. Unethical हो तो हुआ करे, किसको पड़िए, right? And after all, being unethical and yet not being illegal is an art by itself. ये अपने आप में एक कला है. As a researcher, should I be legal or should I be ethical? One has to be both. You have to be legal as well as ethical. फिर इन अनइथिकल लोगों का क्या किया जाए? Should we? और हम उनसे कहें यार बहुत अच्छा, वंडरफुल वर्क, या दूसरा में ये कह रहे करना दो यार, जो कर रहा है हमसे क्या मतलब. I don't agree with both. I'll do this. ताकि ये बिरादरी बढ़े ना.
नाउ लेट अस कम टू रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स। आपने रिसर्च कर ली, आपको रिपोर्ट करना है। जनरली डिसेमिनेशन इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ रिसर्च पेपर और इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिव्यू, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं और उस पर अपने तरीके से लिखते हैं। कटिंग पेस्टिंग इज नॉट एन रिव्यू, प्लीज। So, research study should be reported in an honest, accurate manner. डेटा को मसाज नहीं करना है टू फिट द हाइपोथेसिस। आई एम नॉट सेइंग मैसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट मसाज। स्पा वगैरह सुना होगा, ठीक है। देन डेटा यदि आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं भी कर रहा है, तब भी आपको सच बोलना है। एंड क्रेडिट प्रॉपर देनी है ऑथरशिप की। ये भी एक बहुत मजेदार चीज है। ये एक छोटी सी चीज और है, हैव अ लुक। This is a presentation MPharm, and the examiner is saying, first explain your problem briefly, and the answer from the student is, the problem is my guide. So I don't know, matlab, could be. Negative reporting, as I said, is also reporting. आप नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं तो आप आगे काम करने वालों के लिए रास्ता खोलते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि ये वाला काम नहीं करना, ये नहीं हो रहा है। हम लोग क्या चाहते हैं, हमने जो किया, जैसे अभी सर से भी क्वेश्चन हो रहा था कि भाई ये करा तो इससे सब कुछ हो जाना चाहिए। नहीं, इट्स अ हाइपोथेसिस। सो व्हाट आई मीन टू से इज, यदि गलत रिजल्ट आ रहा, आप बताइए और उसको अच्छे से बताइए। दिस इज एक्चुअली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कलीग्स, नॉट टू मिसलीड देम। Manipulated data may give you short-term gains, but never help in the long run. The cartoon says there's a chocolate smeared all over your manuscript. Have the data been fudged? Chocolate fudge तो सबने सुना होगा, correlate करो, समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। And then these are a few points regarding writing a review. I won't read them, kindly have a look. The whole process of reviewing is not easy. हमारे यहाँ सबसे आसान समझा जाता है, रिव्यू लिख दो, रिव्यू लिख दो। अरे यार, रिव्यू लिखने का मतलब समझते हैं? यहाँ से ले लिया, वहां से एब्स्ट्रैक्ट से ले लिया, यू कांट इवन ओपन द फुल पेपर एंड यू राइटिंग अ रिव्यू। दैट्स नॉट अ रिव्यू, दैट इज कॉल्ड कट एंड पेस्ट। उसकी दूसरी और भी चीज कहते हैं, वो मैं आगे बताता हूं आपको। उसमें इतना सारा काम करना पड़ेगा, तब रिव्यू बनेगा। एंड दिस इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड प्लेजियरिज्म, द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अनदर्स वर्क और आइडियाज एज योर ओन। रिसर्च कितनी भी अच्छी करो, ये सब काम यदि ढंग से आप नहीं करेंगे, देखिए आजकल बहुत सारे तरीके हैं पकड़ने के, आगे आते हैं उस पर। सो हियर इज अनदर आर्ट विच हैज बीन मास्टर्ड बाय मेनी। बहुत से लोग हैं जो इस पर मास्टरी कर ली, वो काम वाम नहीं करते। कौन लैब में केमिकल बर्बाद करे, समय बर्बाद करे? ये तरीका ज्यादा अच्छा है, आसान है। और उसको कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, इंटेंशनली नहीं है। सो बीइंग इंटेंशनली अनइंटेंशनल इज अ स्टाइल इनटू इटसेल्फ। व्हाट इज प्लेजरिज्म? उसके कुछ चीजें मैंने बताने की कोशिश की है। आजकल तो हर चीज का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और ये भी एक तरीका है उसको डिफेंड करने का। The teacher is saying, you know, this paper sounds a little like the article we read last week. And see what the answer is. Well, what can I say? Great minds think alike. So, हमारे पास हर चीज का डिफेंस है। This word comes from Latin word meaning to kidnap. These are some of the examples: copying someone else's words without proper citation, stealing someone else's ideas, stealing someone else's intellectual property, and the bottom line is cite sources properly and minimize quotations in research reports. And if you don't, तो ये भी हो सकता है। These are two prisoners sitting in a jail. एक दूसरे से बात कर रहे हैं। One is saying grand theft auto you, the other one says plagiarism. These are some labels attached. Plagiarism भी हो सकता है, auto plagiarism भी हो सकता है, and this is one thing, salami slicing. What is salami slicing? एक रिसर्च करी
उसके 6 टुकड़े कर दिए और उसको 6 जगह छाप मारा, बहुत बड़े रिसर्चर हो गए। व्हाट नॉनसेंस, ये भैया बंद क्यों कर दिए है? स्लीपिंग मोड में चला जाता है। So I think here they are cited in that. But anyways, by the time we do it, हाँ चलिए करिए, हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम्स। सो मैं ये डिस्कशन इसलिए लेके आया था आपके बीच में बिकॉज अभी कोविड हुआ, सबको पता है, ऑलमोस्ट सारे लोग अपने घरों में बंद थे, एम आई राइट? यस, नहीं घूम रहे थे, जो भी कर रहे हो। उसमें मजेदार चीज ये थी दैट मुझे इतने सारे रिसर्चर्स मिले जिन्होंने कभी जिंदगी में एक भी पेपर नहीं छापा। उनकी सारी रिसर्च कोविड के दौरान हुई। कैसे हुई, बेहतर आप समझते हैं। व्हाट डू आई से, आई हैव सीन पीपल जिनके 19 से उठा के और 21 के बीच में देव गॉट नोज सम 20-30 पेपर्स विद गुड इम्पैक्ट फैक्टर्स एंड गॉट नोज। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो घर में लैब बना ली या लैब में घर बना लिया। आई कुडंट अंडरस्टैंड, आई लीव इट टू यू टू अंडरस्टैंड। So, thank you. Yeah, so finally we are back to normal. So these are, I was talking about salami slicing. So I've already told you about it. Yeah, so what I was saying was, do not report the same research findings in several publications. Then I'll quickly move on. Plagiarism and copyright infringement का difference इसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है. Kindly have a look. इसमें बहुत बोलने का कुछ नहीं है. You can broadly classify this into intentional and unintentional. कभी कभी इंटेंशनल होता है, दोस्त ने रिसर्च करी, उसका कुछ हिस्सा ले लिया, अपने नाम से छाप लिया, राइट? कभी कभी क्या है, खरीद लिया। आजकल तो दुकानें खुली हुई हैं कि कैसा वाला थीसिस चाहिए, 2000 वाला, 5000 वाला, उनसे पूछो फर्क क्या है, बोले एक में प्लेजरिज्म पकड़ में आएगा, एक में नहीं आएगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो दैट इज व्हाट इज बाइंग एंड बोरोइंग एंड कटिंग एंड पेस्टिंग ब्लॉक्स, जैसे आई वाज सेइंग। एंड अनइंटेंशनल में कभी कभी ये सब हो जाता है। और इसके कारण क्या हो सकते हैं? इट कुड बी लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ ट्रेनिंग इन रिपोर्ट राइटिंग। हम लोगों के यहाँ रिपोर्ट राइटिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है और ये अनफॉर्चुनेट है। हम चाहेंगे कि इसमें जो लोग भी सिलेबस बनाते हैं काइंडली इंक्लूड समथिंग फॉर रिपोर्ट राइटिंग ऑल्सो, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड हाउ टू राइट पेपर्स। देन लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। कभी कभी एकेडमिक प्रेशर होता है कि पेपर छापना ही छापना है, तो बेचारा क्या करे, काम नहीं हुआ तो कुछ भी करेगा। देन पीयर प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। दोस्त भी कहेंगे तुम यार कुछ नहीं है पब्लिकेशन, घर वाले कहेंगे तुम क्या रिसर्च करते हो, आज तक कुछ नहीं कर पाए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो दैट इज पीयर प्रेशर। एंड इसमें अब आइए हिंदुस्तान की तरफ। यूजीसी हैज clarified that self-citation does not add any numbers to the author's citation index or index in global academia. ये भी बहुत हो रहा था. So now the UGC has taken out its danda and it's using it. I'll show you how. First, you have a look at this. Stealing ideas is worse than stealing material goods. So you can see the cartoon. It's not the same. I was caught stealing office supplies. You, on the other hand, got
stealing ideas. किसी के आइडिया मत चुराइए, अपने लाइए. 10 types of plagiarism and such. Kindly have a look. Just have a read. मैं इसको पढ़ूंगा नहीं पूरा. अभी चेयरमैन साहब कह देंगे टाइम इज ओवर. सी, इसी को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की उन्हीं 10 को. Secondary sources, invalid sources, duplication, paraphrasing, repetitive research, replication, unethical collaboration, verbatim plagiarism, complete plagiarism, and misleading attribution. So, how can you recognize plagiarism? ऐसे? This is a cartoon which says, but how do you know that it is plagiarism? And the answer is, firstly, this report is barely on the subject I asked for. And secondly, you twice reference challenges you have encountered being a woman in today's world. If you can understand it, it's not a woman. वो जो बंदा बात कर रहा है वो आदमी है यार. And as per UGC, ये है definition. और मैं इस पे आपका ध्यान खींचूंगा. Word क्या है? What is the word like? साहित्यिक चोरी. That is what it is called in Hindi. So, if you are going for plagiarism, basically you are a chore. You are a साहित्यिक चोर, right? And उसमें उन्होंने साहित्यिक चोरी के स्तर भी बताए. चोरी के स्तर तो नहीं होते, चोरी इज अ चोरी, बट साहित्यिक चोरी के स्तर है. कौन कौन से हैं ये देखिए. 10 to 40 words as per UGC. When 10 words are taken together from some established core work, citation becomes essential. And when copied content reaches 40 words in accumulation, the fragment needs to be kept under inverted commas or in italics. ये सारे यूजीसी की गाइडलाइंस है, मेरी नहीं है. ये सेल्फ प्लेजरिज्म पे यूजीसी ने एक नोटिस निकाला था, साइन बाय द सेक्रेटरी यूजीसी. तो लोग क्या है, एक पेपर अपना छापा, उसी को साइट करते जा रहे हैं हर जगह. नो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. और ये एक और कला है जो लोग करते हैं. अपने साइट्स बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है आप देख लीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना. यू कैन हैव लिव. स्ट्रगलिंग साइंटिस्ट प्लीज साइट माय पेपर्स. कटोरा लेके बैठ जाओ, साइटेशन चाहिए तो है. नेवर ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ साइटेशंस ऑफ योर पेपर बाय रिक्वेस्टिंग फ्रेंड्स टू डू इट. इट कैन नॉट टेक यू फार. ये भी एक मजेदार चीज है. यू आस्क देम, पेपर में ये रह गया, तुमने कैसे नहीं डाला नाम, भूल गए. So a few authors often forget to include the names of their guides, co-guides, students, as the case may be when they change the place of work. नौकरी बदल ली, भगवान बदल गया, तो बोले अब क्या डालना, गाइड वाइड तो उसमें है, राइट? They often include new friends or new place of work. अरे भाई, जिस कॉलेज में काम किया वहां का नाम डालोगे कि जहां पहुंच गए वहां का नाम डालोगे? ठीक. और इसको हमने नाम दिया है सिलेक्टिव एमनीजिया. इसको चैलेंज किया जा सकता है, पेपर है विड्रॉ करना पड़ेगा आपको, मत करिए ऐसा. So guidelines for plagiarism check. These are a few of the softwares which are available. ज्यादातर लोगों ने नाम सुने होंगे, right? बट फिर भी मैंने एक बार आपके इंफॉर्मेशन के लिए इनको डाल दिया. यू कैन यूज टर्निटन, ऑथेंटिकेट और आउटपुट. एक्सक्लूजन में क्या क्या छोड़ के आपको प्लेजरिज्म चेक करना है वो सारा मैंने यहाँ दे दिया. जस्ट हैव अ रीड, राइट? कोटेड वर्क रिप्रोड्यूस हटाना है, बिब्लियोग्राफी हटाना है, ये सारी चीजें हटा के आप चेक करेंगे प्लेजरिज्म. ये भी उसी का कंटिन्यूएशन है. और बहुत से लोग हैं जिन्होंने शायद कभी टर्निटन की रिपोर्ट नहीं देखी होगी कि होती कैसी है, तो मैं आपको वो भी चाह रहा हूँ कि आप एक नज़र उसको देख लें. दिस इज हाउ अ टर्निटन रिपोर्ट लुक्स लाइक. वो आपको बताएगा कहाँ क्या है. गेटिंग माई पॉइंट? सी, दिस इज हाउ. और जैसा कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान में आप कुछ भी बोलो, जब तक डंडा नहीं तब तक काम नहीं होता. तो क्या करना पड़ेगा? नाउ वी हैव गॉट पेनल्टीज एज पर यूजीसी, and these are the penalties. Level 0 is up to 10% यदि plagiarism है. Minor similarities, you don't have to go for any penalty. Level 1, similarities about 10 to 40%, you may have to withdraw your manuscript. उससे ऊपर level 2, 40 से 60, इतनी सारी चीजें हैं. और level 3 में similarities about 60%,
विड्रॉ भी करो, 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट भी रुक जाएंगे, और उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप मास्टर और पीएचडी के कैंडिडेट्स लें। ये यूजीसी के नॉर्म्स है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि इंटरनेट पे तो सब कुछ होता है, द इंटरनेट इज अ मिरेकल, न्यू प्रेयर ऑफ द पीपल हुज एंटायर रिसर्च, मैंने इसलिए इस पर री कर दिया, रिसर्च कहाँ है वो, इट इज रिसर्च, राइट, स्टार्ट्स एंड एंड विथ द इंटरनेट, नेट पे ही रिसर्च हो जाती है, ठीक है, अच्छी बात है, व्हाई वेस्ट रिसोर्सेज एंड टाइम। और ये हमारी बिलीफ है दैट इंटरनेट कैन डू नो रॉन्ग। मदर सन टॉकिंग, व्हाट डू यू मीन ऑल माय फैक्ट्स आर रॉन्ग, आई कॉपीड एवरीथिंग स्ट्रेट ऑफ द इंटरनेट। लोग, ये बच्चे अब बिलीव करने लगे, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसको मैंने नाम दिया है द डाउनलोड जनरेशन। सो द मॉम is telling her kid that no, you are not downloaded, you are born. थोड़े दिनों में शायद ये दिन आ जाएंगे। So what should we do? Basically, I have devised 10 commandments. These are the 10 commandments. Always publish only your own work. Honor every team member who worked by including his or her name as an author or acknowledgement. Always acknowledge other sources by giving an honest referencing. Do not copy even a few words from any source unless required for providing reference to context. Understanding the concept of copyright plagiarism and intellectual property right before publishing any work. IPR अब बहुत बड़े वे में है, मत करिए उसका उल्लंघन। और वैसे भी हमारे यहाँ एक कहावत है, कुछ कहो तो आदमी कहता क्यों भाई समझ में आ गया, नहीं आया तो हिंदी में समझाएं, यही कहते हैं ना, कहते हैं हाँ या नहीं, चलो तो फिर हिंदी में समझो। यदि इसमें से 2-4 भी सीख लोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। आई विल मूव टू द नेक्स्ट। दीज आर सम मोर। टेबल्स पिक्चर्स को भी आप बाकायदे एक्नॉलेज करें, फंडिंग सोर्सेज को एक्नॉलेज करें, नेवर सेंड द सेम स्टडी टू 2 डिफरेंट सोर्सेज फॉर पब्लिकेशन। आई हैव सीन दिस हैपन, और मैंने कुछ बड़े बड़े नामों के साथ देखा है, मैं कुछ उनके बारे में कहूंगा नहीं यहाँ स्टेज से। हम लोग जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो पता चला कि एक कोई पेपर है, तब तो इंटरनेट होता नहीं था, तो सन 2000 में एक पेपर छापा गया था, उसी का टाइटल चेंज करके 90% ऑफ द कंटेंट इज द सेम एंड द पेपर हैज बीन रीपब्लिश्ड। ऑल दिस इज हैपनिंग। Never try to pass off manipulated or fraudulent data. Please don't do it. Never conceal research finding so as to mislead. मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप कोई भी चीज छुपाते हैं, गलत बताते हैं, आप आगे वालों के लिए रास्ता गलत तैयार करते हैं। And a committee of on publication ethics has been formed by the government of India, where the core practices are were developed in 2017, replacing the code of conduct. They are applicable to all involved in publishing scholarly literature, editors and their journals, publishers and institutions. हमने कहा ना बिना डंडे काम नहीं होता, so now डंडा is coming from everywhere. कुछ समझ में आया? Lessons learned? ये भी एक कार्टून में नहीं पढ़ूंगा यार, कार्टून भी पढ़ना पड़े तो लानत है, ठीक है ना? Is all this important? Your doctor cheated his way through medical school. कितना अच्छा होता, हम ऐसे डॉक्टर के पास जाते जो नकल करके पास हुआ है, बढ़िया रहता। या हमारे ऐसे लॉयर के पास हम अपना केस दें जो पेपर आउट करके पास हुआ है, ऐसे आदमी से टैक्स जमा करवाएं। तो जब हम ये सब नहीं करना चाहते तो भैया हम ये क्यों करना चाहते हैं? डू यू वांट टू पे यू फॉर योर थीसिस? 1000 रुपए दो, 2 दिन में पेपर लो, ये क्या, व्हाट आर वी डूइंग बेसिकली? वी शुडंट डू दैट। कृपया सीखिए हाउ टू पुट अ बैंडेड, right? My message is not putting up the band-aid, if you can understand. So moral of the story is character precedes conduct because who we are determines what we do. अर्थात ठीक से चल
उसको मैंने हिंदी में भी अनुवाद किया है, वो यहाँ शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है। एंड द रीजन आई वॉज चोजन टू प्रेजेंट दिस सेशन, पीयूष ने हमसे कहा था सर ये सेशन आप लीजिए। क्यों चुना गया भाई मुझे? प्रोबेबली बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी अनइथिकल थिंग्स, या फिर आई एम अ हाईली इथिकल पर्सन, या फिर दे थिंक आई एम अनइथिकल और आज मैं कुछ सीख के जाऊंगा। यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। एंड फाइनली कंपल्सरी एथिक्स ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया। थैंक यू फॉर अटेंडिंग कंपल्सरी एथिक्स ट्रेनिंग। फील फ्री टू गो बैक टू योर wicked sinful lives. I know that I will. Thanks a lot. These are a few of the acknowledgements. Thank you. Thank you, Professor Sra. The clap shows the success of the talk. It was very simple, very interesting. Even I enjoyed it. I'm very poor in listening lectures. And the topic was very relevant and it was well delivered. I congratulate you. I think the younger generation understand what morals are, ethics are, and it was made so clear with examples that the lecture became very interesting. Thank you very much for delivering this lecture. You can ask 1-2 questions if there are any questions. 1 or 2 questions. देखिए इसमें क्वेश्चन जैसे कोई चीज है नहीं। Yes, yes, I agree. यदि क्वेश्चन करना है तो हमसे मत करिए, अपने आप से करिए कि जो कुछ मैंने बताया। So to conclude, you were chosen because you are ethical. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much, sir, for a wonderful speech or lecture. Now, I request to Professor Ranjit Singh to please felicitate Professor Sailendra Kumar Saraf, sir. Now, I request to Dr. Sobit Singh, please come on stage and facilitate to Professor Ranjit Singh. Thank you very much, sir. The last but the not least lecture is here, which is delivered by Professor David Terrio. But before inviting him, I request to Professor DCP Singh, sir, please come on stage and introduce him and then invite him. Good afternoon to all. It is my proud privilege to introduce or read citation of a very high standards scientist, Dr. J. David Terrero. Dr. J. David Terrero is a PhD in Organic Chemistry Science, Program of Natural Products, University of Languana, Tenerife, Spain. In 1994, with postdoctoral studies at the Higher Council of Scientific Research, CSIC, Spain, in 2002, at the Canadian Institute of Agrobiology and Natural Products. He is currently a researcher at the Pontificia University. That names are a little bit difficult.
to pronounce Cattolica Maidarie Mastera, PUCMM, and at the Autonomous University of San Diego, Domenico, USAD. He is an active member of the Academy of Science of the Dominican Republic. He has 3 patents registered with the USPTO, United States Patents. He has credited with the publication of 11 scientific articles and 1 book, and he has actually 30 presentation at the scientific sessions in different countries around the world. He currently works as a scientific advisor in the natural products with the application to the pharmaceutical industry, specifically at Vixa Human Pharmaceutical NJ USA. Now I invite Dr. J. David Terrero to present his presentation. Please, sir. Yeah, pointer. Okay. Jansi, yes, this one. Good afternoon, everybody. First of all, I want to thank uh, Dr. Trivadi for inviting me to this important international conference. And I want to thanks also to Dr. Amit Tiwari, which is my connection with him. And then I want to
thanks to the vice chancellor of this university for the courage to do this type of conference. In this moment, I want to start as soon as I can because we don't have too much time. Let's see if we can do whatever is good to do this. My conference is lactone with an anti-anthrax antinoplastic activity, pharmaceutical development. Before to start to say all of my talk, I just want to say, I want you to put the most of attention that you can, because I want to show one case when you start from zero to the high level doing one pharmaceutical product. I am from Dominican Republic. It's one of the greatest Antilles in the Caribbean. Could you yeah, please put me put me into this. Can I have it more? Okay. Yeah, Zoom. Yeah, here, please. So here, Zoom and Zoom the screen. Zoom. It's okay. Okay. Dominican Republic is one of the greatest Antilles in the Caribbean, and our country is about five. Uttar Pradesh is about 5 times all of the area of our country. I have worked in Autonomous University of Santo Domingo, which is a university state, and I work for the Pontificia University of Catholic Modern Master. I work for that. And I was working when I was doing my PhD in University of La Laguna and University of Las Vegas, Nevada. I have mentioned these 4 universities because my work is a work of collaboration in between some universities. The pharmaceutical industry in this time is the most important business in the world. They have been working a lot in order to get drugs because it's the most business that it is right in the moment in the market. This present work is the development of a new drug whose active ingredient it is an exercise of more than 1 decade. During the last decade, to have therapy alternative for diseases is one of the most important points of the pharmaceutical industry. The higher levels of research of this type of activity has been relegated to those bigger industry in the world, like Merck. But this work, however, show the intrepidity, scientific knowledge, how intrepidity of scientific knowledge along with vision can get to the high level or to the next level. When I put this, I am showing you MagnaChem is a local company and Merck is a big company. But you can go from local company to the big company only because of the human resource. Bioterrorism, speaking of that, on thinking about my title, which is anti-anthrax lactone, let me say you that bioterrorism has been one of the practices far from the past. Bacillus anthracis is part of that. Bacillus anthracis is a disease. Anthrax is a disease caused by Bacillus anthracis, which is a microbe which live in the soil. Anthrax produce different form of disease. The background of bioterrorism, it is a lot of it, because in 1939, in the Second War, we have the Polish has a point of terrorism, have a history of terrorism
in 1952, in 1966, in 1981, in 1984, in 1995, and in 2001, it was the last important case of terrorism in the world, which was in the attack to the Twin Tower in New York. On the other hand, we have cancer. Cancer is the second cause of death in the world. Possibility of developing cancer in some moment of the life, it is 43% in men and 38% in women. Cancer is one of the leading cause of death worldwide. In 2022, almost 10 million of deaths were attributed to this disease. Breast 2.26 million, lung 2.21 million, colorectal 1.93 million, prostate 1.41. As you see, go on. So important is how so important this disease in the world. This work show and describe the discovery of a new drug, biotech, and is an antibiotic and a neoplastic. This research has been done during more than 1 decade. The scheme to get to achieve this the whole molecule is this. And I will go in a little slow in this because I want you to understand how has been the scheme. First, selection of the vegetal material. Second one, botanical identification and compilation. Third, extraction and extract concentration. 4, chromatographic biodirected isolation. 4.1, antibiotic bioassay. 4.2, cytotoxic bioassay. 5, spectroscopic study. 6, acute, subacute, toxicological studies. 7, study of pharmacokinetic and bioavailability. 8, study of adverse effects in healthy human. 9, study of organic synthesis. 10, study of organic expression. 11, preliminary clinical trial and patent. As you see, this scheme of work is really a really large scale, but it is the best way to get one in research from 0 to 100. And when I say 100, I'm telling the moment when this pharmaceutical product can be launched in the market. The criteria for the election of this vegetal was ethnobotanical information, chemotaxonomical information, and preliminary bioassays. Dominican Republic has a really rich flora. About 1,800 plant has been identified as an endemic. Our plant is Securidaca virgata. It's a plant from Polygalacia family. And the information what we have about this plant is a little bit less, a little bit poor, few. Only some paper mention the other species belong to this genus. Identification of botanical and recollection, extract. Chromatographic isolation bioassistance. This is important to say that when you are trying to isolate something, some molecule, what you want to direct to pharmaceutical products, you need to be assisted for chromatographic isolation. Then, when you have isolate your molecule, you should use high and low resolution mass spectrometry to have the molecular weight. Then you need to use nuclear magnetic resonance to elucidate the structure.
elucidation the structure. Our work, when we were working in the nuclear magnetic resonance, this is the information what we have, and this information lead us to a lactone with a methylene in the external part of the ring. This is one spectrum. This is another type of experiment in nuclear magnetic resonance. Is a cozy hydrogen and hydrogen connection. This is a carbon and hydrogen connection. And when you have already elucidated your structure, the next part it is to go to the synthesis. Here I'm showing you the way how we synthesize our molecule and some other derivative. It's a reaction of one part when you part this type of you part from an alkene using a aldehyde with this type of condition. Then you go to this intermediate, then you go to this. This intermediate can go to this dose type of lactone, and then you can go to this way and this way and then this way. But to get from this way to this way and have this one of the molecule that you are trying to have, the different to be here is going to be, or it's going to depend of the aldehyde and the alkene what you use in your starting step of your reaction. Here we have the bioassay for anthrax. And the bioassay for anthrax, we were working with 8 different molecular concentration using this work was done in 4 hours, and as you see in the bottom of this line, how our Bacillus anthracis in the 996 tray, the Bacillus anthracis in the 96 tray bioassay in ELISA, spectromic ELISA assay goes from in the hour 4 goes from 0.769 to 0.122, which it say that as a optical density is going down, it says that in this point we got the better activity of the lactone. Here again, with the synthetic lactone, more or less the same, from 0.741 to 0.081. The optical density goes very fast to go down. Then we have cytotoxic bioassay to know, of course, to know the anti-neoplastic or anti-cancer activity. Is for the normal test that we make the cytotoxic bioassays. MTT, it is transformed from mitochondrial reductase to formasan, which is a color substance, which it says about the viability or the level substance in the assay. Here we have
the different sales line that we have already aside test is Chinese hamster body, human breast cancer cell, mouse fibroblast cell, human lung cancer cell, human Caucasian pancreatic adenocarcinoma. And these are our results. Chinese hamster ovary cell to Sir, please 48. just accelerate your presentation. Due to some time strain. Okay. Just accelerate your presentations. Good. It's the same. Go. Another one. Toxicological study. Then the importance of this molecule is it is that we have a DL50 less than a DL60 about 250 milligram per kilogram, which is a good DL50. Subchronic activity, all the information of the tissue of the liver, same. Here pharmacokinetic study, which is one of the most important study what you can do when you are trying a pharmaceutical product. When we compare our half time, it is similar to citarabina, cetirizine, and micacina. And then some biogenomic assay with Saccharomyces cerevisiae, which say that the most important part of the bioassay is that it is that our molecule, it is to say that RAB9, it is the molecular target to it. Test of frames to know if the mutagenicity in the vitro. Formation. Yes, the final what I want to say is that to launch to the market a pharmaceutical product, most of the most important company in the world invest about 2,425 million of euros. When you do this type of work, you really are working with an important business in the world. This is the stage of the investment, and this is the pattern what we have with this molecule. Those are the collaborators and authors: Dr. Braulio Manuel Fraga, Dr. Fermín Mercedes, Dr. Elsa Guadaño, Dr. José Ramón Murguía, and me, Dr. José David Herrero. All of those work were done in these three universities: University of Santo Domingo, University of La Laguna, Tenerife, Spain, and University of Las Vegas, Nevada, in United States. So finally, I want to. Excuse me. I finish here. For finally, I want all of the students see this and take a picture of this, because this is a company which is interested in invest in a student in all over the world. So they have a website, and try to follow, and you will see how important it is that.
Thank you. Thank you, sir. I think for the students and the faculties, he has given a very good example of how research stage are going on. And I think in cancer research, it is a teamwork and how this research are going on abroad. He has given a very good example. New students or the faculty members can actually evaluate him or benefited him that how the drugs are actually evaluated, they have investigated, and for the lead structures and how they are synthesized and they are actually evaluated for toxicological studies, etc. Thank you, sir. Very good. You have some any questions or any queries? Now the lecture is open for discussion. कुछ पूछना है लोगों को? There are no queries. Yes, sir. Thank you very much. Okay. Thank you very much, sir. Have you any query, please? Okay. So I request to Professor DCP Singh, sir, please felicitate to Professor David Terrio, sir, as a memento and a certificate, please. Okay, now I request Dr. Vengesh Dikshit to please come on stage and felicitate to Professor DCP Singh as a certificate and a memento, please. Thank you very much, sir. Now, this is the lunch time and lunch is waiting outside behind the auditorium. So please, we will resume after 45 minutes here for cultural activity.
तो जूम हो रहा है ऐसा वो जूम हुआ है शायद जूम आउट अरे हमने कुछ रिमोट वही छुआ ही नहीं गया वैसे ही रखा हुआ भैया हो सकता है दब गया हो अरे ऐसा नहीं है जूम जूम दबा
As a filler, one song is going to perform. As a filler, program is yet to be started. Program is yet to be started as a filler. One song will be sung by these guys. Hey everyone, तो आज मैं एक सॉन्ग गाने वाला हूँ अभी हाल कैराओके पे. चलिए सुनते हैं उसको भी. हेलो. माइक दे यार एक. बोल. हेलो हेलो हेलो. Only registered participants are allowed here only. No outsiders should be here. Only registered participants are allowed here. Please, those who are outsiders, please leave the auditorium. गार्ड सर जरा ध्यान रखिए, बच्चे बाहर से नहीं आ पाए यहाँ पे. आई कार्ड देखें बच्चे तभी एंट्री करें. रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स केवल एंट्री करेंगे यहाँ पर बस. हेलो 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 हेलो. रिवर्ब बढ़ाओ इसका थोड़ा रिवर्ब. कैराओके का वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा. माइक का भी वॉल्यूम. ला 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 ला. नटखटी कॉलेज की लड़कियों लड़कियों यूं मोहब्बत से मुझको ना देखा करो. हज मेरी आरज़ू के लिए अपनी मासूमियत को न रसवा करो. मेरी नटखटी कॉलेज की लड़कियों लड़कियों
क्यों मोहब्बत से मुझको ना देखा करो। हे हे ला 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 ला, हे हे ला 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 ला। फिसल जाए मैं वो दीवाना नहीं, तो बदल जाए मैं वो जमाना नहीं। बाढ़ जाएंगे खाली सभी ये तेरे नजरों के मुझ पे न मारा करो। मेरी नटखटी कॉलेज की लड़कियों लड़कियों, क्यों मोहब्बत से मुझको ना देखा करो। बस यही था सॉन्ग। हेलो 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 चेक माइक चेक। हेलो हेलो। हूरो सी लदी इस बस्ती में आवारा सा एक नाम हूं मैं। हूरो सी लदी इस बस्ती में आवारा सा एक नाम हूं मैं। हुस्न के ही हैं बाजार सभी, हुस्न का ही तो खरीदार हूं मैं। हूरो सी लदी इस बस्ती में आवारा सा एक नाम हूं मैं। हुस्न के ही हैं बाजार सभी, हुस्न का ही तो खरीदार हूं मैं। और उस एक नाम की कुर्बत से, उस एक नाम की कुर्बत से दिन रात खोया सा रहता हूं। उस एक नाम की चाहत में सरोसार यूं ही बदनाम हूं मैं। और वो जो लास्ट रो में लोग बैठे हैं कुछ सिर्फ उनके लिए कि उनके संग बिताए हर लम्हे में सुरूर है। उनके संग बिताए हर लम्हे में सुरूर है। वो साथ हैं तो मुझ में एक अलग ही गुरूर है। और उनकी गैर मौजूदगी खलती है इस कदर, उनकी गैर मौजूदगी खलती है इस कदर, जैसे बदन हो फांसी पे और रूह बेकसूर है। जैसे बदन हो फांसी पे और रूह बेकसूर है। धन्यवाद। मजाक बुलाओ तब सुनाएंगे। अच्छा सुना दे। अबे आगे टीचर्स बैठे हैं फिर गड़बड़ा नहीं जाए। शुरू हो गया क्या मैं? Good afternoon, everyone. As we are heading towards our cultural event, firstly, I would like to call upon respected Nandlal sir to take over. Can we have a huge round of applause for sir? हेलो हेलो सर तैयार। हेलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ओके सो ये जो प्रोग्राम है
बहुत ही मेहनत से तैयार किया हुआ है, अपने जो साथी है आपके, ठीक है। उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे इसको। और अब बिल्कुल दिमाग को फ्री छोड़िए, शरीर को फ्री छोड़िए, ठीक है। तो प्रोग्राम की शुरुआत एक शेर से करना चाहूंगा। अर्ज किया है कि ये सच है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए किस्मत की रजामंदी होनी चाहिए। ये सच है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए किस्मत की रजामंदी होनी चाहिए, लेकिन किस्मत भी सिर झुका लगी, बस हौसलों में बुलंदी होनी चाहिए। कि वो बीमार हुए, हम उनको देखने उनके घर गए। वो बीमार हुए, हम उनको देखने उनके घर गए, और वो हमारे एहसान तले दब के मर गए। शादी हुई, बीवी आई, किस कि शादी हुई, बीवी आई, घर स्वर्ग बन गया और मैं स्वर्गवासी हो गया। ओके, ओके, सो लास्ट, दांत खाज खुजली कुकर खांसी, इन सब का इलाज खैरात अस्पताल झांसी। ओके, थैंक यू। I invite Shruti and Manvi for the anchoring of program. Shruti and Manvi, please come on the stage. Thank you, sir. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, सलाम वालेकुम, वड़क्कम। A very good afternoon to all the invited dignitaries, faculty members, and our lovely audience present over here. I Manvi Pandey, And I, Shruti Gupta, the host for today's cultural event, would like to extend our heartiest welcome on the prestigious land of Maharani Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi, who is well known for her bravery, valor, and courage. You all must have heard about the famous slogan which says, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। as we all know, Lord Ganesha is worshipped first before the commencement of any event. So, to embrace our culture and seek the blessings of God, we would like to call upon the stage Anjali Maurya for Ganesh Vandana. Can we have a huge round of applause, please? गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा। दा मेरे अधूरे काज सनी दा कर दे तू पूरे सानी दा पानी दा पमगा सब बस बदली।
गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीनाय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि गोविन्दाय गौरीधनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Make some noise for one more. Yeah. I don't know why I'm more. Thank you, Anjali, for such a soulful performance. The illiteracy of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who can't learn, unlearn, and relearn. As our former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee quoted that I have a vision of India free of hunger and fear, an India free of illiteracy and want. Lacking basic reading and writing skills is a tremendous disadvantage. Literacy not only enriches an individual's life, but it creates opportunity for people to develop skills that will help them and their families. Coming upon is a skit that deals with the problem of illiteracy. Sir, please off the light. Sir, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट. ऑडिटोरियम की लाइट बंद कर दीजिए. सुन नहीं रहे. ये ऑडियो हेलो बंद कर.
Hello, hello, hello. Good afternoon, everyone. So, I hope मैं आशा करता हूं कि आप सबने अभी तक एंजॉय किया है काफी, और हम भी एक नाट्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो नाट्य हम प्रस्तुत करते हैं। मैं इस नाट्य की शुरुआत इन पंक्तियों से करता हूं। निर्धनता भी दूर हो, मिले मान सम्मान, शिक्षित मानव के लिए शिक्षा है भगवान। नमस्कार, आज हम सब अशिक्षा के ऊपर एक नाट्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बंसीलाल का घर। बंसीलाल घर के बाहर सोया हुआ है। उसकी पत्नी उसको आवाज लगाती है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अरे चचा, अरे ओ चचा, उठो। अरे चचा, राम राम। अरे चचा, तुम्हारी चिट्ठी आई है। मुझे मेरी बख्शीश दो और जाने दो। बस 5 रुपए? ये तो मेरी बख्शीश थी। चिट्ठी पढ़ने के 5 रुपए मैं अलग से लूंगा। देखो चचा, अगर आज मैं तुम्हारी चिट्ठी मुफ्त में पढ़ देता हूँ तो कल से सारा गांव मुझसे मुफ्त में चिट्ठी पढ़वाएगा। 5 रुपए में बस मैं इतना बता सकता हूँ कि ये चिट्ठी आई कहाँ से है। लो चचा, बताओ। लो चचा। सेना मुख्यालय, जम्मू कश्मीर। क्यों चचा, तुम्हारा लड़का सेना में भर्ती है ना? हाँ हाँ, उसी की चिट्ठी है क्या? हाँ, उसी की चिट्ठी। ठीक है चचा, चलता हूँ। राम राम। प्लीज आप लोग थोड़ा शांत रहें। अम्मा, सुनती हो रघु की अम्मा? चिट्ठी, मेरे लला की चिट्ठी। क्या लिखा है इस चिट्ठी में? जब से सेना में भर्ती हुआ है, यह उसकी पहली चिट्ठी है। अरे अब हमें पढ़ना लिखना कहाँ आता है। लिखी होगी। आप एक काम करिए, सेठ जी के पास जाइए और उनसे ये चिट्ठी पढ़वा के आइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। सुनिए, जल्दी आइएगा। इस चिट्ठी में क्या लिखा है ये मुझे भी जानना है। ठीक है। बंसीलाल चिट्ठी पढ़वाने के लिए सेठ के घर निकल जाता है। सेठ अपने नौकर कलुआ के साथ घर के बाहर बैठा हुआ है। नहीं हो रहा है क्या? नहीं मालिक, आपके राज में सब बढ़िया है। तुम्हारी जनानी की हाथ निकल रहा है। जरा दो लगाते बा। कौन आ रहा है? बंसीलाल है मालिक। बंसीलाल? बंसीलाल? ये बंसीलाल मालिक, जिसका लड़का सेना में भर्ती हो गया है। उसी के कहने पे उसने आपके खेत में काम करना बंद कर दिया। लगता है अकड़ भर गई है मालिक इसमें। अच्छा, तो ये वो बंसीलाल है। आने दो इसका छोड़ो। राम, क्या हाल है?
सारी तबीयत ठीक हो जाएगी। बंसीलाल चारा काटने में लग जाता है। सेठ कुर्सी पर आराम करता है और कलुआ उसका हाथ पैर दबाता है और कुछ समय बाद सेठ को नींद आ जाती है। फिर कलुआ भी वहीं सो जाता है और सेठ की पत्नी बंसीलाल के पास खाना लेकर जाती है। बाबा मैं भी आपकी तरह ही मजबूर हूँ। दरवाजा खुलने की आवाज से सेठ की नींद टूट जाती है। बंसीलाल के खाने की थाली छीनकर कलुआ अपने मालिक के आदेश का पालन करता है। सेठ घर के अंदर चला जाता है। उदास बंसीलाल फिर से अपने काम में लग जाता है। अब शाम का समय। क्यों शोर मचा रहा है? मालिक को बहुत मेरा चारा सब काट दिया मैंने। एक भाई बंसीलाल, मालिक अभी आराम कर रहे हैं, तो तू कल आना, तेरी चिट्ठी कल पढ़ देंगे। निराश बंसीलाल अब चिट्ठी को पढ़वाने के लिए लाला के परचून की दुकान पर जाता है।
राम राम बंसीलाल। और यहाँ कैसे आना हुआ? अरे काम तो लगा रहेगा। सुना है कि तुम्हारा लड़का सेना में भर्ती हो गया है, तो मेरा पिछला हिसाब कब चुका रहे हो? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ दो, अभी पढ़ देता हूँ। तो देंगे आप, नजर का चश्मा तो आपका घर है, जाइए ले आइए। अच्छा, अभी मैं घर जाके लेकर आता हूँ। रे बोला बोला। जब तक ये घर से आ रहे तब तक आप थोड़ा काम नहीं हाथ बंटवा देते। रे बोला, भैया को जरा काम बता दे, तब तक मैं घर वो आती हूँ। बताओ क्या करना है। भैया आओ, आओ। तनिक ये बोरियां है ना, अंदर रख दो, तब तक मैं सामान जो है उस शुक्ला जी को देके आता हूँ। चलो। भोला शुक्ला जी का सामान पहुंचाकर वापस आता है। मैं तो भूल गया था, मुझे तो पढ़ना था। यहां से भी निराश होकर बंसीलाल अपने घर की तरफ जाता है। आ गए आप? वो आके गए हैं, शाम को लौट रहे हैं। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अच्छा ये बताइए, चिट्ठी पढ़वा दी आपने? तुम दिमाग खराब करो, जाओ यहाँ से। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? किसी ने हमारी चिट्ठी नहीं पढ़ी, सारा काम मतलब ये है। हम गरीब आदमी हैं, गरीब के साथ तो ऐसा ही होता है, हर कोई गरीब का फायदा उठाता है। गलती हमारी गरीबी की नहीं है रखी अम्मा, गलती हमारी है। इसको मारे मारे होते। अब बंसीलाल और उसकी पत्नी रोटी को प्याज के साथ खाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह का समय। चाय पी लीजिए। अरे यार, बिना माफी चाहे नहीं। पढ़वा कर आइए, सेठ जी ने कहा था ना कि वे आज हमारी चिट्ठी पढ़ देंगे। ठीक है जाता हूँ, अरे चाय तो पी लेने दो। और सुनिए, आज देर मत करिएगा, इस चिट्ठी में क्या लिखा है ये जानने के लिए मैं कल से तड़प रही हूँ। ठीक है जाता हूँ। ये लो। तभी पड़ोसी का लड़का गगन खेलते हुए वहां से गुजरता है।
दादाजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे बताइए ना दादाजी, बताइए तो। तो क्या हुआ दादाजी? मैं पढ़ देता हूँ। मुझे काका का पूरा आता है। जी दादाजी। कहिए। पढ़ दे बेटा, पढ़ दे, भगवान तेरा भला करे। सेना मुख्यालय, जम्मू कश्मीर। सेवा में बंसीलाल जी, आपको बड़े दुख के साथ यह सूचित किया जाता है कि आपका बेटा सिपाही रघुवीर बत्रा रात में अचानक हुए हमले में शहीद हो गए। सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब पूरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। धन्यवाद। इस नाट्य के पात्र कुछ इस प्रकार थे। कार्तिकेय मिश्रा बंसीलाल के रूप में, प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज साइलेंट हो जाइए थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए साइलेंट। इस प्रस्तुत नाट्य के पात्र कुछ इस प्रकार थे। कार्तिकेय मिश्रा बंसीलाल के रूप में, स्मृति सिंह
बंसीलाल के पत्नी के रूप में, शिवेश कुमार सेठ के रूप में, अंजलि वर्मा सेठ और लाला के पत्नी के रूप में, सुमित तिवारी कलुआ के रूप में, नागेंद्र शर्मा भोला के रूप में, अभिमन्यु सिंह डाकिया के रूप में, गगन शर्मा पड़ोसी के बच्चे गगन के रूप में, अमन गुप्ता सेना के मेजर के रूप में, आशीष कृतिमान सोमेश अनमोल सेना के अन्य जवान के रूप में, परीक्षित प्रजापति बैक स्टेज आर्टिस्ट के रूप में, और मैं अतुल मिश्रा आपके बीच और इस नाट्य के बीच का सूत्रधारक और इस नाट्य में लाला के रूप में उपस्थित था। धन्यवाद। Thank you guys for such an emotional act. The Bundelkhand region is rich in folklore and tradition, inhabited by numerous tribes, each with their own varied culture and costumes. The region has much to showcase in terms of dance and music. Among the many folk arts, now a group is here to present the Bundelkhand folk dance, that is, Rai dance of the Bhedia tribe, which is an intrinsic part of its heritage and present day identity. रुको ना, फोटो खींच रहे हैं। मान लिए फोटो ले रहे थे वो।
देखनी तनोहिर कनी नार गुलजार उड़े मुके सो सवेरा
Give them a huge round of applause. Thank you, girls, for representing the culture of Bundelkhand region so beautifully. Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm to life. Here we have Akash to make this evening even more magical by his melodious notes. हेलो 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 माइक हेलो 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 रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया लग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहन सारी तेरी खैर मनाऊं
आंखों से छू लूं के बाहें तरसती है, दिल ने पुकारा है हाँ, अब तो चले आओ आओ के शबनम की बूंदें बरसती हैं, मौसम में सारा है हाँ, अब तो चले आओ तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाबों को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ ना चाहे से में तू मेरे, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, मुझे खुद में जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, ओ यार तुझे प्यार की बत्तियां क्या समझावा, रोज ये लड़की रोज मनावा, इससे आगे इसमें क्या करूं, ओ यार तुझे प्यार की बत्तियां क्या समझावा, रोज ये लड़ती रोज मनावा, इससे आगे तो मैं क्या करूँ। The musical series had not ended yet. Now we have Pratibha from B Farm third year for the beautiful song. ज्यादा उसके पास मत जाना, ये लो। सॉन्ग चलेगा ना? चार पाँच ये क्या आकाश चार पाँच ये क्या हाँ ये आकाश चार पाँच You wanna do me? Okay.
Thank you, Pratibha. In the continuation, I would now like to call Junadan Group for a song. हेलो हेलो आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे तो प्राण दे जो मन करे तो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे तो प्राण दे जो मन करे तो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई बस नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जिसके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। या का भाव या की सौर्य का चुनाव या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या की शौर्य का चुनाव या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे बाल पे जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो।
भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा लेट शुरू करना। लेट कैसे अब शुरू करें, स्लोली पढ़ लेना या तो। Thank you so much, Junaid and group. We still feel lost in those melody dipped music notes. Hello. Mime. Mime is a theatrical technique of presenting action, characters, or emotions without words, using only gesture, expression, and movement. Mime makes the invisible visible and visible invisible. Now, we would like to call upon stage a group to showcase how the pharmacist played an active role facing lots of challenges amidst the COVID pandemic. नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए हम सोए नहीं गए अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया बीमार है धर्म का है की थी अब उसका रंग सफेद हुआ जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। तेरी मिट्टी में जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों को जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू हेलो हेलो तो दिन रात भी बेहार, घर की रोटी बाद में खाई, पहले हमने दवा पहुंचाई। देश था जब घर के अंदर,
तब भी बाहर थे दवा जब थे पास खड़े थे। जय हिंद, जय भारत। Thank you everyone for such a heart-touching act. The land of enchantment and beauty, with rich and beautiful culture and heritage, and even more beautiful people. We are proud to be in the Indian culture as it has lot more to offer. गुजराती हो या मराठी, पंजाबी हो या बंगाली, हर भारतवासी खाए एक ही अनाज की थाली. Now we would like to present a group dance themed Unity in Diversity, ending with the Radha Krishna Holi to vibe with the upcoming festive season. Can we have a huge round of applause? I hope kiss ढोल जगीरो दा ओ ढोल जगीरो दा ओ बीकानेर विच छड़ाइए मले दी गल तुक तोड़दा तेरा परछावा बीकानेर विच छड़ाइए मले दी गल तुक तोड़दा तेरा परछावा
सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए जाऊ द्या न घरी जाऊ द्या न घरी जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी बिजती हर वाला वो किसना है
Thank you so much, guys, for such a beautiful act. अब राई डांस दोबारा कराना है, दोबारा बोलो राई। In folklore and tradition, inhabited by numerous tribes, each with their own varied culture and costumes. The region has much to showcase in terms of dance and music. Among the many folk arts, now a group is here to present the Bundelkhand folk dance, that is Rai dance of various tribes, which is an intrinsic part of its heritage and present day identity. हमारा भी कर रहा है ये भी है हमारा भी लाता है
Thank you so much, girls. The land of enchantment and beauty, with rice and beautiful culture and heritage, and an even more beautiful people. We are proud of our Indian culture as it has a lot more to offer. Now, we would like to present a group dance themed Unity in Diversity, ending with Radha Krishna Holi to vibe with the upcoming festive season. Can we have a huge round of applause, please? श्याम रंग श्याम रंग आए हो किस बगे ढोल जगीरों दा ओ ढोल जगीरों दा ओ बीकानेर विच छड़े शिमले दी गल टुक तोड़दा तेरा परछावां बीकानेर विच छड़े शिमले दी गल टुक तोड़दा तेरा परछावां
सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। जाऊ त्यानं घरी मला जाऊ त्यानं घरी मला जाऊ त्यानं घरी मला जाऊ त्यानं घरी जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला वो किसना है
Thank you, girls, for such a lovely performance. Now we came to end of our event. Now we are signing off. Thank you so much for being such a lovely audience and making this event more alive and happening. Thank you.
using this one or this one? This one? Can you hear me? No. Can you hear me on this? But again, thank you so much for inviting us and bringing us on this very important forum. And I think it was a great success, and it was very well done how it was that the hospitality was awesome. We were overwhelmed with the hospitality that we got, some of us. So thank you again so much for inviting me and inviting our guests. So with this, I would, take and request you to, put your hands together and give a round of applause for the organizing committee. All right. So I think I would let other more important people to give a word of thanks, and there are more eminent speakers. So let me invite the Vice Chancellor, Dr. Mukesh Pandey, to come and give a talk and give more word of wisdom, for this conference. गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस गांधी सभागार में 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आज सेकेंड डे है, लास्ट डे है। एंड इन दिस valedictory function, all my friends and the key speakers from Pan India as well as the different countries of the world who present here and shared their experience, their technology, their expertise. So, as I have been conveyed by the different faculty members and the participants and the delegates during the interaction, this is a very wonderful conference. You have gone through the very cutting edge technologies, emerging areas in the field of pharmacy. What is the research and innovation practices are going on across the world? I think all the students have gained some expertise and experience by listening the expert lectures of these scientists.
This is my always endeavor to the students and the faculty of the Bundelkhand University to empower, to enrich you with the emerging technologies. What is going on in the world, what is going on in the India, and what is the academic excellence and the practices adopted by the institution of eminence. बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना रियली एक टफ टास्क रहा, बट ड्यू टू द cooperation and the concern of the guests and the experts who came over here, this conference became very successful. My dear students of the B Form and the M Form, this type of interactions and the deliberations and conferences certainly will be beneficial and fruitful you. जैसा कि प्रोफेसर तिवारी ने भी ये बताया कि पूरे वर्ल्ड में आपकी पर्टिकुलर, चाहे फार्मास्यूटिकल साइंसेस की बात करें, क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें, फार्मास्यूटिक्स की बात करें, लेटेस्ट और रिसेंट रिसर्च टेक्नोलॉजीज क्या चल रही हैं, इनोवेशंस क्या चल रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है. Whatever experts we have invited, we have called from the premium institution. You just search the website of these institutions. Now you can feel the kind of research, the quality of the research these type of institutions are doing. These are all are the key scientists of the world. आप लोगों ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लिए स्टूडेंट्स इंटरेक्शन के लिए समय निकाला एंड दे शेयर्ड देयर आइडियाज एंड द नॉलेज. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है. कॉन्फ्रेंस तो होती हैं, तालियां भी बजती हैं, लोग आते हैं, स्नैक्स भी खाते हैं, चले जाते हैं, पर सवाल इस चीज का है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, if they will continue the journey of the research, journey of the academic excellence in the due course of the time, in that way this conference will be real time in meaningful way. और इस जर्नी में स्टूडेंट्स आर द इम्पोर्टेंट लिंक एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स. आप लोग ये जो डिस्कशंस हुए हैं, यू कैन थिंक अबाउट द स्टार्टअप्स and later on these startups can be transformed into the unicorns. You can develop the entrepreneur's skills. Bundelkhand University do have the innovation centers. We are providing the financial support, mentoring support and guidance and motivation to all the students and the faculty to come with the good idea of the startup. जो भी यहाँ पर इंटरेक्शन हुए हैं, चाहे प्रोफेसर तिवारी ने की हो, प्रोफेसर डेविड ने की हो, एक इनके 45 मिनट्स के लेक्चर से यू कैन राइट 50 एटलीस्ट मिनिमम 50 रिसर्च पेपर्स. ये लोग जो 45 मिनट्स में बताया है, इनके एक एक वर्ड में, एक एक शब्द में एक रिसर्च पेपर निकलता है, एक रिसर्च पेपर निकलता है. What the kind of dedication and devotion they are doing in the laboratories. जब आप लोग आए, मेरे पास बैठे हुए थे, तो मैंने बोला कि चलते हैं 5-10 मिनट्स में चलते हैं, लेट्स वी एंजॉय सम टी एंड कॉफी एंड सम कुकीज. तो बोले नहीं, वी आर इन टेंशन. मैंने बोला व्हाई यू आर इन टेंशन? तो आपका एक कीवर्ड था, यू जस्ट अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड डिवोशन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. आपने ये बोला कि हम जब किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना स्पीच डिलीवर करते हैं, अपना एक्सपर्ट लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो हम उसमें हम अपना पूरा माइंड बॉडी सोल को इंटीग्रेट कर देते हैं. उसके बाद वो यज्ञ या अनुष्ठान के बाद जो लेक्चर प्राप्त होता है, वो आप लोगों के सामने ये प्रेजेंट करते हैं.
इनके प्रेजेंटेशन से आपको लगता होगा कि ये सिंपल पीपीटीज हैं, 10 पीपीटीज बताई और आपको बता दिया, आपने सुन लिया, ताली बजाई, थैंक यू, नहीं। पर जब ये लोग अपना पीपीटी प्रिपेयर करते हैं उसमें कितना इनका इनपुट लगता है। मुझे प्रोफेसर तिवारी ने बताया यस्टरडे नाइट ही प्रोफेसर डेविड एंड ऑल वर प्रिपेयरिंग द पीपीटी अप टू 2 AM, रात को 2 बजे तक इन्होंने पीपीटी को तैयार किया। जब ये लोग मेरे पास ऑफिस में आए थे तो देवर यार्निंग लाइक दिस, उनके क्या हो गया, नींद पूरी नहीं हुई क्या, देयर वर मॉस्किटो, क्या थे, प्रॉब्लम था। कहेंगे नहीं नहीं, हम लोगों की नींद पूरी नहीं हुई, वी दे ऑल वर बिजी इन प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशंस फॉर यू। एक व्यक्ति यूएसए से आता है, परेशान होता है, टाइम चेंज ओवर भी होता है, उसके बाद वो एक लेक्चर डिलीवर करता है, तो रियली उसका अभी तक की एक जर्नी का एक कंक्लूजन रहता है, उसमें उसका स्वेट रहता है। तो इन चीजों से आपको सीखना भी चाहिए। एंड द बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हैज एक्सटेंडेड दिस प्लेटफॉर्म, you can expand and continue this platform for the further networking। और मैं समझता हूं चाहे प्रोफेसर रंजीत सिंह हो, प्रोफेसर सराफ हो, प्रोफेसर डेविड हो, प्रोफेसर त्रिवेदी साहब हो, प्रोफेसर वाघपाई मैडम हो, दे आर ऑल हैविंग वेरी फ्रेंडली अप्रोच। खुद आपको ये बोलते हैं कि ये मेरा मेल आईडी है, ये लिंक्डइन है, ये ट्विटर है, यू कैन पुट योर क्वेरीज, यू कैन प्लेस योर क्वेश्चंस, और वो करेंगे। आज टुडे मॉर्निंग we also went across at the inaugural ceremony of some science Vigyan Mahotsav science exhibition. We started the science exhibition on 1st of February, and whole month, right from the 1st of February, 28th February, various activities of the science and technologies were being displayed to the students of the college students and the school students. तो वहां जब ये एक्सपर्ट्स गए, बच्चों से एक इंटरेक्शन किया, उनके एक्सपेरिमेंट्स देखे, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स का हो, फ्रिक्शन का हो, विस्कोसिटी का हो, वेलोसिटी का हो, प्रेशर का हो, ईवी चार्जिंग का हो, रिन्यूएबल एनर्जी का हो। तो छोटे छोटे बच्चों ने एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से ये बताना चाहा कि इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। वहां पर प्रोफेसर स्कॉट, प्रोफेसर तिवारी, प्रोफेसर डेविड, Professor Pai were quite impressed with the kind of interaction they were have with the students. इन लोगों ने कई बच्चों को ये कुछ अपना पिन दिया, फार्मेसी पिन दिया, किसी ने अपना कार्ड दिया, कुछ तिवारी जी अपने कोट की चारों जेबों में यूएसए की टॉफीज रखे हुए थे, उन्होंने दोनों हाथों से अपनी टॉफी भी दी बच्चों को। गिविंग द पेन, गिविंग द टॉफी इज नॉट नथिंग, पर जो स्टूडेंट्स थे आज इतने ज्यादा मोटिवेट हुए कि कई स्टूडेंट्स मेरे पास वाइस चांसलर ऑफिस में आए, उन्होंने बोला साहब हमको जो आपके फॉरेनर्स आए हुए हैं उनसे मिलना है। तो मैंने उनको बोला कि बेटे फॉरेनर्स आए हुए हैं, उनका एक एक मिनट कीमती है, यह मैं पूछूंगा, यदि टाइम रहा तो मैं जरूर ही आपको मिलवाऊंगा। साथ ही आप सभी लोगों ने एक ये भी कहा, with the help of the different NGOs working in USA and other parts of the country, they are having their objective for the empowerment of the students in certain areas of India. उसके माध्यम से हम आपके जो आइडियाज हैं, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी के हों या फार्मेसी के हों, हम अलाइन करने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे कि आपको हाउ वी कैन ब्रिंग द स्टूडेंट्स ऑफ द बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एट द वर्ल्ड एंड ग्लोबल लेवल। सो दिस इज द टाइम ऑफ क्लोजन। वैसे तो बातें आपको काफी करना है, तो सबसे पहले जितने यहाँ पार्टिसिपेंट डेलीगेट हैं, हमारे जो इन्वाइटेड एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोगों ने 2 दिन दिए, उनके बिग राउंड अप्लॉज। Now you reply in the question yes or no, whether you want to organize more wonderful conference next year also, yes or no. Raise your hands. Now you see
या सो आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी इस प्रकार का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो? वेरी गुड. तो दिस इज द कॉन्फिडेंस एंड द स्ट्रेंथ शोइंग बाय यू. और तो निश्चित ही हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी लोगों से कि नेक्स्ट ईयर में ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करें, बट नॉट इन दिस मंथ. आई थिंक इन द नवंबर एंड द दिसंबर. नाउ द टेम्परेचर इज 40 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड. आप लोगों को बहुत गर्मी लग रहा है, तो जो चेयरफुल राइट हम लोग चाहेंगे कि नवंबर दिसंबर में व्हेन द बुंदेलखंड रीजन इज हैविंग पिंक वेदर, कोल्ड ब्रीज, कोल्ड एयर, वेरी गुड, वेरी वेजिटेबल्स, उस समय एंजॉय करवाएंगे आपको. ओके, नाउ आई एम thankful and grateful. Really, I didn't have any words. From the bottom of my heart, core my heart, on behalf of the each and every students, faculties, teaching, non-teaching staff, we are very grateful to all our distinguished guest experts from India and out of the India. First of all, we are grateful Professor Pia Vogel. Please. Thank you for your coming. Thanks for your visit. Thank you. We are thankful to Professor Scott Hall. Thank you. We are also extend our heartfelt thanks to Professor Jay Ramapuram. And young, energetic, looks like film star. कौन है फिल्म स्टार बताइए? तिवारी सर. यस. प्रोफेसर अमित तिवारी. और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो तिवारी जी हैं ये बहुत दूर के नहीं हैं, और कब तक ये दूर रहेंगे हमसे? ये यहाँ से 2.5 घंटे के रास्ते पर ही एक जगह है चित्रकूट धाम, और जो कि दैट इज ए पार्ट ऑफ द बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी. तो हम चाहेंगे कि एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन दी फार्मेसी में बनाएं और इनको एज ए सीईओ अपॉइंट करें. So Professor Tiwari, he is my younger brother. I am also grateful to, and my mentor, my guide, and you can say my guru of the whole academic journey, Professor Piyush Trivedi ji. यहाँ फार्मेसी के जो फैकल्टीज बैठी हुई है, जो फार्मेसी का जो जनरेशन हुआ है ना, जैसे एक बोला जाता है एक बरगद का पेड़ लगता है, पेड़ लगने के बाद उसके छोटे छोटे फ्रूट्स होते ये होते हैं. तो झांसी के पास ही एक सागर है. ऑल ओवर वर्ल्ड आप जहां भी झांसी मतलब प्रोडक्ट आप देखेंगे, फैकल्टी या स्टूडेंट, वो ऑल हैव बीन पास्ड आउट फ्रॉम द डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर. तो जो त्रिवेदी साहब हैं ये फार्मेसी फील्ड के स्टार्ट जनरेशन के, यू कैन से फर्स्ट या सेकंड के. तो अब यहाँ जितने फार्मेसी के टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ये सब 4th या 5th जनरेशन के हैं. तो त्रिवेदी साहब बिलोंग करते हैं 1st या 2nd जनरेशन. ऐसी पर्सनालिटीज को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हमने आमंत्रित किया. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय गौरवान्वित हुआ आपको सम्मानित करते हुए. हम आभारी हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स भी यहाँ पर उपस्थित हैं. प्रोफेसर रंजीत सिंह, साथ ही मेरे जो साथी यहाँ पर उपस्थित हैं
प्रोफेसर शैलेंद्र सराफ। अन्य जो यहाँ पर सभी के नाम ले पाना संभव नहीं हो पा रहा है, पर अन्य जो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, टीचिंग फैकल्टीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन सभी को मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ समय निकाला और हमारे छात्रों को का नॉलेज एम्पावरमेंट किया। द काइंड ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म you are looking with in the students and the faculty, certainly हम आपसे एक we would like to invite you again in the premises of the Bundelkhand University next year। and जैसा त्रिवेदी साहब का भी एक मन था कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सीरीज है ये फर्स्ट है, हम नाउ वी विल कंटिन्यू फॉर दी 100-200 लाइक दिस। होता यह है कि वैसे तो यूनिवर्सिटीज में कई प्रोग्राम्स रहते हैं, कई लोगों का ये सोचना भी रहता है कि इस प्रकार के प्रोग्राम से टीचिंग लर्निंग अफेक्ट होता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स 100% टीचिंग लर्निंग के रहते हैं। आपने जितना ये 2 दिन में समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, एक वर्ल्ड लेवल का टेक्नोलॉजी देखा होगा, इतना आप बुक से यदि पढ़ेंगे तो आपको ये कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। दिस इज द हाई एंड टेक्नोलॉजी। जैसे एंड्रॉयड हम मॉडल बोलते हैं या एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स बोलते हैं, तो ये आपको एप्पल आईफोन 13 और 14 की टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। आप जब बुक में पढ़ते हैं तो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, आप 1 से स्टार्ट करते हैं, एंड्रॉयड 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, और जब तक आप 7-8 पर पहुंचते हैं तो 9 लॉन्च हो जाती है, जब तक आप 9 पर पहुंचते हैं तो 10 लॉन्च हो जाती है, जब आप 14 आईफोन का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सीखते हैं तब तक 15 लॉन्च हो जाता है। नाउ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। हर घंटे हर मिनट में एक आविष्कार हो रहा है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यदि हमारे कैरियर की शुरुआत हाई एंड टेक्नोलॉजी से होती है तो हमारा विजन बढ़ता है। मैंने तो अटेंड किए नहीं लेक्चर, पर ये लेक्चर में आपको ये मालूम ही चला होगा कि फ्यूचर डिमांड क्या है। What is the direction of the research and innovations in the field of pharmacy? ये कुछ मालूम चला होगा आप लोगों को। अगर एंटी कैंसरस ड्रग की हम बात कर रहे हैं तो उसमें लेवल मॉलिक्यूल्स का लेवल कहां तक पहुंचा है, नैनो मॉलिक्यूल्स का कहां तक पहुंचा है, ये आपको एक मालूम चला होगा। और एट द लास्ट मैं पूरे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, खड़े हो जाएं आप लोग। ये अब सभी के नाम ले पाना संभव तो नहीं है, पर इससे पूरी जो इसकी ऑर्गेनाइजिंग टीम है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की, आप लोगों ने 1 महीने में मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत की है। और उसका रिफ्लेक्शन कैसे आता है कि जितने हमारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा ये एक रिमार्क दिया गया कि आपके इंस्टीट्यूशन की फैकल्टी बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छे से लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। तो रियली मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के आप प्रोग्राम करते रहें। एक डिपार्टमेंट में जब रहते हैं 10-15 फैकल्टी रहती है तो 2 फैकल्टी इस साइड जाती है, 2 इस साइड जाती है, 2 इस साइड जाती है, कुछ नीचे जाते हैं। अब जब ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई तो कुछ लोग मेरे पास आए, कहेंगे सर इतनी जल्दी कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। अरे मैंने कहा भैया इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो आप घर पे बैठो, मैं ऑर्गेनाइज करके बताता हूं। ठीक है, तो जब कोई भी एक रहता है तो ये आपको जो एम्पावरमेंट मिला है, अब इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मेसी के नाम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो गया है। चाहे प्रोफेसर डेविड की हम बात करें या प्रोफेसर स्कॉट की बात करें, प्रोफेसर तिवारी की बात करें, अब ये लोग सभी जगह जाएंगे तो ये बोला जाएगा कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट में थोड़ी वगैरह दम तो है। इसका
स्टूडेंट्स आपको इसका फायदा कैसे मिलेगा? आप देखिए, ये एक आप विजन की बात करिए। फॉर एग्जाम्पल आप अपना पीजी करने जाते हैं, पोस्ट डॉक करने चाहते हैं, पीएचडी करने जाते हैं, और कोइंसिडेंटली उस पर्टिकुलर पैनल में या रिव्यू करने के लिए मे बी पॉसिबल डॉक्टर स्कॉट के पास पेपर चला जाए, या डॉक्टर तिवारी के पास चला जाए, या किसी XYZ के ऊपर चला जाए, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए। जब ये लोग इंडिया से वापस पहुंचेंगे वहां, तो इनसे ये पूछेंगे कि आप कहाँ कहाँ गए, बोलेंगे XYZ जगह गए। फिर वो पूछेंगे आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा, वो बोलते हैं एक झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में फार्मेसी कॉलेज है, वो भी अच्छा कॉलेज है। और संयोग से एंड बाई कॉन्सिडेंस आप यदि उसी व्यक्ति के पास अपना इंटरव्यू देने पहुंच गए कि अच्छा हाँ झांसी, झांसी यस इन यूपी, द लैंड ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, तो ऐसा इसका इनडायरेक्ट फायदा मिलता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि काफी स्टूडेंट्स बाहर पोस्ट डॉक वगैरह करने जाएंगे, तो आप लोगों से बड़ा अच्छा लगा। और पूरे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिवार की ओर से वंस अगेन वी आर ग्रेटफुल, थैंकफुल टू ऑल आवर एक्सपर्ट्स, एंड आई होप आपका स्टे यूनिवर्सिटी में प्लीजेंट रहा है, कंफर्टेबल रहा है। और यदि कोई गलती है, कोई डेफिशिएंसी रही है, तो सर्टेनली वी विल in future we will try to comply the things. Thanks you very much. Thanks all. Thank you, sir. Your words really inspired us. Moving on to the prize ceremony, our first category is for the oral presentation. Now, I would like to request again Honorable VC sir and Professor Piyush Trivedi sir to please come on the stage and present the awards to the winners. I request all the dignitaries, please, and speakers, please, to come on the stage. I would like to request everyone for a great round of applause for every dignitary members. So the third prize for the oral category, oral presentation category, goes to Juhi Mishra from PSIT Kanpur. हाँ सर, रोक लेना। The second prize goes to Purnima Tripathi from Institute of Pharmacy, Bundelkhand University, Jhansi. I would like to request Rashmi Chaudhary to please take the award from her behalf. And the first prize goes to Pratibha Kushwaha from University of Hyderabad. I would request the oral presentation committee members, Dr. Shashi Alok sir,
Dr. Prem Prakash sir, Dr. Grish Chand Soni sir, Mr. Kailash Rai sir to please come on the stage. I would also request Mr. Upen Sharma sir to please come on the stage. हाँ लास्ट ही है मैम ये लास्ट हाँ yes ma'am yes I request all the faculty members, please come on the stage. All the faculty members of the Institute of Pharmacy, please come on the stage. Please come. हो तो गया प्रतिभा कुछ बाहर तो गए फर्स्ट वाले का नाम अनाउंस कर देना जब तक वो से टाइम लगेगा हो तो गया प्राइस होगा मैं फोटो हो गया हम लोग की फर्स्ट वाला हो गया इस पे जाने अरे नहीं एक साथ हो गया सबकी बोल देना ना बोल दो सबको लेके जाओ बोल देना चाह अरे एक मिनट रुक जा फोटो हो जाए मैम आइए मैं थोड़ी जाऊँ आ रही आ रही अरे अगला नाम दो ना तुम जिसके वो इसको नहीं देना है पोस्टर का बोलो Thank you committee members and all the faculty teachers. काइंड अटेंशन ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ द यूजी पीजी। देखिए आप लोगों का एक अच्छा जो आपने डिसिप्लिन को एग्जिबिट किया है और आपने अपनी एक अच्छी इमेज बनाई है एक्सपर्ट्स के सामने, तो कुछ एक्सपर्ट्स आपसे इसी हॉल में अकेले में इंटरेक्ट करेंगे, हो सकता है हम लोग नहीं रहें। अब इसमें कई एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि वी विल इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। हमने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला हम बच्चों को एम्पावर करना चाहते हैं, नॉलेज एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। क्लियर? तो ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, हम लोग नहीं है, वी आर ऑल गोइंग आउट, और जो लोग भी हमारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स बात करना चाहते हैं तो बात करेंगे आपसे। Moving on to the next category, that is poster presentation. So for the third prize, I would like, so the third prize goes to Sulakshana Pawar, PhD, BU Jhansi, and Preeti Tiwari, M.Pharm, BU Jhansi. Then second prize goes to Rishabh Mishra from BBD NIT. Please be prepared. Can I have a big round of applause for the winners? The first prize for the poster presentation goes to Preeti Verma from Shobit University. Please come on the stage fast. Yes. First value.
The organizing committee members of the poster presentation, please come on the stage for a photograph. Respected Bhavna Sharma ma'am, respected Dr. Ram Narayan Prajapati sir, Dr. Rizwana Khan ma'am, please come on the stage. प्राइस भी अनाउंस करो ना इनकी कर चुके पोस्टर की क्या नाम है किस नाम सिद्धार्थ सुलक्षणा कौन है ये? The winners, please come on the stage. Preeti Verma, please come on the stage. Preeti Verma and Preeti Tiwari, please, for the photograph. नहीं इसके बाद हो गया राजेश पवार हो So, moving forward, we have a scientific session award for Dr. Rajesh Pawar sir for this his outstanding service, a chairperson in lecture session. Sir, please come on the stage. Please, big round of applause for sir. All the poster and oral presentation winners, please come behind the stage for the photograph. क्या बैठा है सब लोगों को हाँ रिक्वेस्ट कर लीजिए कि फोटोग्राफ Thank you so much, Honorable Vice Chancellor, sir, the dignitaries, and all the faculty members. Thank you. रुक जा, हाँ जाने दो। कृपया ध्यान दें जो जिस बच्चे को फर्स्ट पोस्टर अवार्ड मिला है फर्स्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला है कृपया वो मंच पर आने का कष्ट करें फर्स्ट पोस्टर फर्स्ट प्रेजेंटेशन फर्स्ट आइए आप हैं हाँ ओरल फर्स्ट प्लीज गो देयर पोस्टर फर्स्ट अवार्ड प्लीज कम ऑन द डायस प्रीति वर्मा
Well, good evening. I don't want to keep you too long. I just want to give a big thank you to everybody who's been involved in organizing it. There's been so many of the women here who have been helping us out, and everything was going so smoothly. So you should be proud, and I am proud, and I'm so honored to have been here. Thank you. I want to give a special thanks to the cultural event, girls who do put a lot of effort to put a nice cultural event after the conference. Thank you so much. Well done, girls. I want to echo with all other people who have said here regarding the success of the conference. I echo with them, and I do not want to repeat those words. And I'm very thankful. I'm honored to be here as part of the conference, first of all. Second thing, what I would like to say here is it's a beginning. I heard that this is the first international conference that was held in the city of Jhansi in the Bundelkhand University. So a good beginning is half done. You guys have accomplished a lot from starting the first conference, and that means it is a beginning. And we look forward to see more conferences like this in the future. Wish you all the best. Thank you. Very honored to be here. I'm really impressed about the warm reception we have. So I want to thanks to the Vice Chancellor, Mr. Mukesh Pandey, for all his fine attention to us. I have really been honored to be in this international conference, New Paradigm. Really, thank you for everything. Thank you. I'll echo the comments of everyone else. This has been a wonderful, wonderful conference. Everyone who has organized everything has been incredibly gracious. You've raised hospitality to a new level that other places will have difficulty matching. And I too very much look forward to returning here again very soon. So thank you. Thank you everyone for inviting me. I had a memorable stay here and wish you all the best. And thank you for inviting me again. Thank you. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद इस अद्भुत कॉन्फ्रेंस के लिए। और जैसा सर ने कहा है, पांडे सर ने, कि हर साल कराएंगे और हम हर साल आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। Thank you, everyone. Thanks to the organizing committee. And the best part that I found out here was the level of energy right from the Vice Chancellor to the students was wonderful. Thank you, everyone. सो अभी ये समय ऐसा लगता है कि जब हमने बात शुरू की थी प्रोफेसर पांडे से, जस्ट आई स्पोक ए वर्ड टू हिम कि वीसी साहब जरा देखो कॉन्फ्रेंस करना है। और क्या बोले, सर आप कॉन्फ्रेंस करो, कुछ भी करो, आप कॉन्फ्रेंस तो करना ही है। सो कॉन्फ्रेंस कैसे हुई, आई मीन यू कैन नॉट इमेजिन। और उन्होंने जो हेड हैं भारद्वाज, उनको डायरेक्ट किया। एंड उन्होंने पूरा, तो पांडे साहब हमारे जो वाइस चांसलर जो हैं आपके, और हमारे पांडे जी जो हैं वो जादूगर हैं। तो आपने ये जादू, ये पूरा जादू इतना बड़ा देखा उनका। इट्स ऑल, इट्स यू कैन से इट्स ए शो, वन मैन शो। ही स्टार्टेड इट, ही जस्ट वहाँ बैठ के उन्होंने सबको पूरा स्टेज जिसको जमाना होता है, आप समझिए। एंड पीपल आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू। A wonderful conference, lot of deliberations, very important people here. और जिन्होंने जो those who have deliberated like on all aspects, it's not touched one aspect.
लेकिन फील्ड के सभी एस्पेक्ट को टच करते हुए आपको ये बता दिया कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं. And it's an amazing time over here. Everybody enjoyed here in the conference of the conference with Professor Pandey at his home and his office. So congratulations to Dr. Pandey and his entire team, Department of Pharmacy, all his fellow colleagues in the various departments, the office members, office bearers in the office, and the students. Because this conference is successful because of two people, three people. One is the boss of the university. The second, the people who have delivered their very, very important talks in front of you, and the patient listeners who are there. So I must congratulate all the students. Thank you. Thank you so much, ma'am, and all the dignitary speakers for your kind and well wishes. It has been truly a great couple of days. Thanks for all kind of well wishes and positive encouragement. This makes me very proud of the team and all who contributed to making this a great conference. So now I would like to invite Dr. Vijay Kumar Singh sir to give the vote of thanks. Respected dignitaries, Professor Piyush Trivedi ji, former Vice Chancellor RGPV Bhopal, Professor Mukesh Pandey ji, Vice Chancellor Bundelkhand University, Professor Ranjit Singh, Vice Chancellor Sobhit University, Gango, other eminent guests, deans, faculty members, administrative staff of the university, and dear participants. Now it's time to conclude the conference. This international conference was organized successfully on 27th and 28th of February 2023 in hybrid mode. The online mode was hosted on Cisco WebEx and YouTube platform simultaneously. Overall, 800 plus participants were registered for the conference, in which 140 candidates were registered for poster presentation and 82 candidates were registered for oral presentation. The oral presentations were concluded in 4 sessions of 2 hours each, and 1 session of 4 hours long were used for poster presentation. In day first, 3 sessions of expert lecture were conducted by Professor F. Scott Hall on the topic 5-HT1B receptor as a target for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder. Next lecture was delivered by Professor S.K. Jain on the topic nanotechnology based colon targeted drug delivery. Another lecture was delivered by Professor Pia Vogel on the topic combating multi-drug resistance in cancer. On day second, 5 sessions of expert lecture were conducted by Professor C. Karthikeyan on topic targeting neural kinase as a therapeutic approach for neurogenic disorder and a case study. Again, next lecture was delivered on the second day by Professor David Terrero on the topic enzyme profile predict hepatoprotective hepatogenerative effect of active compounds in Urena lobata extracts. The lecture delivered by Professor Jai Babu Ramapuram entitled as Fabrication of Oro-Dispersible Film Using Extrusion-Based 3D Printing. The lecture delivered by Professor Amit K. Tiwari on the topic Innovative Approach to Induce Unconventional Cell Death in Multi-Drug Resistance Cancer.
The topic delivered by Professor S.K. Saraf, entitled as Decoding Research Ethics and Plagiarism. All the sessions were interesting and informative and were nicely covered the theme of the conference, New Paradigms in Pharmaceutical Research and Development 2023. Friends, if remarks by the press and attendance at the conference are any indications, our conference on the theme New Paradigms in Pharmaceutical Research and Development 2023 has been a great success. For this overwhelming success, I first of all thank to the sponsors and the participants at the conference. The participants who are eminent researchers belonging to different streams of pharmaceutical sciences as well as other biological sciences, they managed to attend this conference, canceling their many preoccupations to provide the conference the benefit of their research experience and eruditions. Our thanks due to all members of national and international delegations for giving very informative and interesting lecture sessions, which definitely catalyze the students, researchers to explore frontline research areas. However, we must, in the first place, thank our Honorable Vice Chancellor, Sir, and Member of Parliament, Sri Anurag Sharma ji, who in spite of their busy schedule were available for the conference. Our thanks also goes to the member of print and electronic media who have correctly reflected the views and outcomes of the conference. We are also thankful to our respected audience without whose presence the color and glamour of the conference would have been absent. We also extend our thanks to the organizing committee and all persons connected with the holding of the conference. Before I conclude, I thank all of you once again for your cooperation. We will remember the contributions made by all towards the success of the conference. Lastly, we thank all participants of cultural program to make the evening of the ceremony and conference memorable for the years. Thank you. Thank you so much, our organizing secretary, Sir Vijay sir. Last but not the least, thank you so much everyone for being such a wonderful audience that participated enthusiastically throughout the session and kept an entire duration interactive. So now I kindly request each one of you to please stand up on their respective place for the Rashtragan. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ जागे शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल धायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की मातरम मातरम Thank you everybody. Thank you NPPRD. Thank you Jhansi. Thank you all. Thank you so much.